said that in the chat? Cammy did. Is that Cammy was chill also. Super chill, right? Super chill. Yeah, no. So I failed this mission. I failed this mission because I have to do something. It's the first time I've done this kind of a mission. Oh. Yeah, I'm watching a podcast on my phone here. Too boring to just do one thing like grind a game. Streaming is... I don't even know why I stream at this point. Hey, maybe one day I'll become a famous YouTuber. Yo, dude, what the hell? This is ridiculous. Dude, I don't like this. Let me move, bro. I don't like this. Oh my god. Am I a stupid idiot? Am I a stupid idiot? Only responses. You just won't step through. Don't even know what I'm doing, bro. Let me go. Let me go. Fucking. Where am I supposed to go? Join! Join and subscribe. Like and subscribe, motherfucker. Hey, let me move, motherfucker. Let me move. Join! That's because there's What? Where? Did I? Dude! What? Dude! What? What? Where the transport? Dude, this shift is so stupid, bro. What? Shift and... What the hell? What is this? So shift and power strike will teleport me like 100 meters ahead? Wow. I'd like to see some large-scale open space battles on this one. This one was too restrictive. I just had to like go through a tunnel. Now can you hear me? Join! Like and subscribe! Oh my god, theming is so stupid. I'm making videos for other people to look... For other people to look at and laugh.
It's a lie. Yeah, you got that video on your DITRH channel? What, this video? It's go on the app, hit the question mark. Excuse me. And then hit the circumnavigation right there. Corgan's Going in, of master. course. Gara. And that's a great explainer. Yeah. Arrow. So you hit the circumnavigation, which is right there. Everything in orders, operator? Is that a pun? I will attempt to bypass this fault. Right Inaros Prime. there. So, The one who referenced this, It's a new type of pet. Booster. Kraken Master. Mirage Prime. Nitane. Each virus. Okay, enough of this chat. Each virus produced by the painstaking expression of billions of rare ocean when dwelling in what? Painstaking expression of billions of rare ocean. How are they billions if they're rare? How are they rare if they're billions? Ocean vent. There's a vent in the ocean. Dwelling microorganisms. Nightwave offerings only? Wow. I want the Nightwave only come. I want to try this. Neza Prime. You need systems. How do I get the systems? Neuroptics. Orthos Prime. How do you own this one? Nix. Nix looks interesting. So how do I... What does the neuroptics do? Let's try another Arcwing. So I have to use the Archwing in Uranus. That one. Don't even know what the hell is going on. What? I'm so confused. I don't know what to. Why is it? Plexus. Oh my god, there's so many things, and it's all quiet. You know, it's totally quiet. Nightwave. Hey. Methane extract.
Saturn 6, man, but Saturn 6. 666. You see that? You see what they did there? All these demon worshippers, man. Why they worship so much? Baruch Doan silhouette. Where are the Nitane extracts? They're all locked, aren't they? Ouroboros and the owl. Used to purchase night. Oh, I need to play this game fast. Okay, I don't know what to do. Fuck it, I'm just gonna do a mission, man. I had to kill somebody here. I remember that. That's something I remember from this game. Oh my god. Hey, man. And the EA app is so fucking irritating, bro. Okay, let's listen to some. कर्मकांड नहीं है आपको बैठने से पहले आपके नीचे आसन के नीचे यमीन को शुद्ध करना पड़ेगा एक यंत्र छोटा सा यंत्र बनाना पड़ेगा आप पात्र रखेंगे उसके पहले यंत्र बनाना पड़ेगा बिफोर इवन स्टार्टिंग द उपासना ऑफ द देवता शुद्धिकरण ये वो सब I can't just do one thing, bro. I need what? शैव और शाक्त तंत्र में और पद्धति में अंतर यही है कि शुरू में जैसे कि हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव देता हूँ शुरू में कश्मीर में हुआ था कि शैव तंत्र प्रोमिनेंट वहाँ पे शैव सिद्धांत भी था जो आज साउथ में हाँ ये मैं ही बात कर रहा हूँ ये मेरा ही आवाज है समझे 3 तरह का आगाम शास्त्र निकला मैंने भगवान शंकर ने दिया था निकला इन द सेंस कि उसके मुंह से निकला था ये माना जाता है इसीलिए वो सिद्ध है स्वयं सिद्ध है भगवान शंकर जो चीज़ बोलते हैं वो उसमें तो कोई डाउट है नहीं फाइनल चीज़ ऑथोरिटी है तो एक उसमें पहला चीज़ है शैव आगम जो है वो वहाँ से आता है आपको What the hell was that? वो डुअलिस्टिक भक्त यहाँ पे भगवान है उसके बाद है रुद्र आगम पार्टी डुअलिस्टिक पार्टी यहाँ हाँ थोड़ा सा हम लोग सेम भी है लेकिन सेम नहीं और तीसरा है भैरव आगम है अद्वैत वेदांत नहीं अद्वैत शैव अद्वैत ठीक है तो इसमें से भैरव आगम का जो सोच है यहाँ पे तंत्र साधना का मार्ग भैरव शिवा से धीरे धीरे शिवा का बहुत सारे रूप और उसके बाद देवियों का काफ़ी सारे माँ काली का फिर सिस्टम था फिर बहुत सारे देवियों का वहाँ से उत्पत्ति स्टार्ट One of my एक तंत्र के मार्ग में ये था शैव तंत्र जो अभी कश्मीर के बाद कश्मीर There's a heavy unit चला गया Robotic इनफैक्ट signature detected. Lock and load. जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट चालू हुआ उस समय पे सबसे प्रधान पॉपुलर धर्म पूरा इंडिया में शैव धर्म पूरा कश्मीर से लेकर बंगाल तक पंजाब तक अच्छा हरियाणा तक सब जगह इनफैक्ट इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर और उसमें तो ब्रांचेस था मत्तमयूर एक ब्रांच है ये दूसरा ब्रांच है कुछ शैव मोनास्ट्री था पूरा इंडिया में दे यूज्ड टू कंट्रोल कि कैसे सिखाते थे शिक्षा के क्रम में चलता है आपको साधना करना तो वहाँ से शिक्षा लेना पड़ेगा बता देंगे कैसे साधना करना और वंस
केम ये सब मोनास्ट्री डिस्ट्रॉय, और एक बार डिस्ट्रॉय हो गया 50-60 साल के अंदर मेमोरी क्योंकि वो नॉलेज मोनास्ट्री में ही था। तो आज भोपाल में जैसे सबसे ज़्यादा महाकाली होता है एक समय पे, लेकिन I love this topic, bro. I love the topic of Indian Vedic theosophy, I guess. आज वहाँ पे आप किसी को कोई बंगाली लोग नहीं आएंगे, nobody knows, जिसे बाकी How would one classify? Did somebody show some kind of irritation? I don't like when people get irritated because I'm the most irritated person in the world right now. But anyway, nobody's allowed to get irritated around me or they have to leave. So if this stream is irritating anyone, should just leave. तो ये था शैव सिस्टम। आज वो सिस्टम है नहीं, आज बस थोड़ा सा एक्सक्लूसिव अगर बोला जाए तो आज बहुत हरामी सिस्टम है। थोड़ा सा तमिलनाडु में शैव आ रहा है, और बाकी पॉपुलर भक्ति से चलता है। शिवा इज वेरी पॉपुलर। Stay focused. There's a heavy unit approaching. लेकिन वो पॉपुलर सिस्टम है, सिस्टमेटाइज वे में और नहीं चलता, और वहाँ से धीरे धीरे करके शक्ति उपासना को शिवा शक्ति उपासना में क्या है, वो शिवा उपासना में जो बेस था वही चीज़ दिया गया, लेकिन यहाँ पे शक्ति को ऊपर किया कि फाइनल स्टेज में पाराशक्ति, जैसे वहाँ पे था फाइनल स्टेज पाराशक्ति और पाराशक्ति, यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं पाराशक्ति। ये सिर्फ पूजा पद्धति के हिसाब से देखा जाए, लेकिन 90% अब आपने अच्छी बात शिव प्रधान, लेकिन उसके बाद शक्ति का एक हम देखते हैं बड़े बड़े शिवाजी महाराज शक्ति का बात, उसके बाद मतलब आप किसी भी क्षेत्र में आप देखिए देवी पूजा और वो एक धर्म की रक्षा उसकी वो एक प्रतीक बन जाता है, और वो हमारी फ्रीडम मूवमेंट में भी आता है। भारत माता तो तो ये एक मतलब इंटरेस्टिंग नहीं इसका अभी वो थोड़ा मतलब शक्ति का जो वो हुआ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग। हाँ, और इसका मुझे लगता है एक तो नॉर्मल फिजिकल कारण एक ये है कि जैसे मैं बता रहा था कि वो एक बार मोनास्टरी सब डिस्ट्रॉय हो गया ना, और सबसे अच्छा पूरा भारत में सबसे ज़्यादा मोनास्टरी मध्य प्रदेश वॉज दी एपी सेंटर। वहाँ पे एक लाइन ऑफ शिवाचार्य रहते थे, इतना कॉन्स्टिट्यूशन है, भोज राजा वहाँ पे शैव सिद्धांत यूज टू फॉलो आगामा मंदिर में शिवा मंदिर कैसे पब्लिक फेसिंग रिचुअल कैसे है, यानी पब्लिक है वो कैसे रिचुअल, और प्लस देयर इज एन इनिशिएशन सिस्टम जो और वो गौशाला मंदिर है ना। हाँ, तो जहाँ पे देखा नहीं। अच्छा, वो बहुत जरूरी जाना चाहिए, वो जाना है, विशाल शिवलिंग है वहाँ पे। और ये एक है अच्छा बंगाल साइड में था, इवन पंजाब साइड में, मेरी लास्ट मुझे तो याद ही नहीं। That was it? The hell? टॉप सेंटर्स ऑफ शैव। अच्छा, हरियाणा में एक समय पे था कि कार्तिकेय का पूजा सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरा नॉर्थ इंडिया में इतना कार्तिकेय का पूजा हरियाणा में होता है, ठीक है, वो सब द गॉड नॉर्मली बंगाल साइड में। अच्छा, माँ काली का पूजा अभी तक चल रहा है, लेकिन किसी को याद नहीं शंकर भगवान के हमारा मोनास्टरी हुआ पूजा इतना ऐसे है कि वहाँ से आचार्य लोग साउथ इंडिया में जाके सिखाते थे, वो कोई सोच नहीं पाएगा, आज तो किसी को याद ही नहीं है। आज जो धार्मिक मानसिकता के लोग हैं वो साउथ इंडिया के बाप कितना अच्छा हो रहा है, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, बात सही है, लेकिन तो होता था ये इस बात का किसी को याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? इसका एक कारण ये है कि पूरा सिस्टम यहाँ पे मठ बन गया, मोनास्ट्री बन गया, मोनास्ट्री पावर स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू है ना, चाहे टेम्पल हो, चाहे मठ हो, चाहे इंस्टीट्यूशन था। हाँ, इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, बाकी वो नॉलेज
साधारण लोगों में था नहीं। डिस्ट्रॉय मतलब कैसे बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं, सबको मार भी दिया। वही तो जो प्रोटेक्ट, वो तो मतलब जान लगा के प्रोटेक्ट करते थे जो वहाँ पे रहते थे, तो उनको वो भी खत्म हो गया। तो 50 साल 100 साल के अंदर मेमोरी गायब हो। लेकिन उसके बाद शाक्त तंत्र तो उपासना बहुत सारे पुस्तकों में लिखा गया धीरे धीरे करके, उसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हुआ। कहीं आप एक मठ नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे ही माँ काली का मठ है, यहीं पे माँ तारा का मठ है, मंदिर है, तो मठ नहीं है। तो क्या हुआ इंडिविजुअल गुरु, मान लीजिए आप एक आचार्य हो सकता है, आपके पास बैठ गया साधना तो कुछ किया, फिर मेरा एक अपना मंडली डिसाइपल का हुआ, मैं लेके कहीं और शहर में बैठ गया, तो मेरा डिसाइपल से उसका डिसाइपल हुआ, वो जाने की बहुत ये इम्पैक्ट है कि इंस्टीट्यूशंस को ये बर्बाद करते हैं, देन डेमोक्रेटाइजेशन। एग्जैक्टली। अब ये इसके लिए आज भी महाकाली को बंगाल साइड में इतना मंदिर, जितना डिस्ट्रक्शन उसके बाद भी मिल जाएगा आपको, पूजा पद्धति अभी तक इंटैक्ट है, लेकिन शिवा पूजा पद्धति सबका है वो यही साथ में हो रहा था भक्ति मूवमेंट के साथ साथ। हाँ। जो इंडिविजुअल तक पहुंचा रही थी, सरल, ना आपको कोई मंदिर की जरूरत है ना कुछ और, सिर्फ कहानियाँ और भक्ति के थ्रू आप अपनी सनातन धर्म को जिंदा रखें। तो ये है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलरिज्म। वो चलता क्या स्पाइट ऑफ व्हाटएवर द नेचुरल एवोल्यूशन। यस, और ये पूरा इंडिया में हुआ सर। गुजरात का बात शिवाजी महाराज जब देख लीजिए। अच्छा, ये एक फर्स्ट पॉइंट वन ऑफ द आंसर टू पॉइंट टू स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव कि मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। मुझे लगता है कि इंडिया का धार्मिक रिजरेक्शन, धार्मिक रिजरेक्शन ऐसा नहीं, सेकुलर रेगुलर वो तो होता है। ये सवाल मेरे को पूछना था, आप चलो आप खुद ही बता रहे हो तो मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है। इंडिया का धार्मिक रिजरेक्शन है, मुझे पता नहीं इसमें इसे रिजरेक्शन क्या वर्ड है। पुनरुत्थान। पुनरुत्थान, करेक्ट। पुनरुत्थान, धार्मिक पुनरुत्थान का जो फाउंडेशन है, Assassination contract complete. Great किसी work, न Shadow. किसी तरह से कहीं ना कहीं कैसे तो वो ऊपर वाले का यही विधान है, नेचर का विधान है कि शक्ति उपासना जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये स्टेप 1 है। मैंने बोला सिर्फ शक्ति उपासना, लेकिन स्टेप 1 में शक्ति उपासना होना पड़ेगा और इंडिविजुअलाइज शक्ति उपासना। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्ञानी, बहुत बड़े सिद्ध साधक महापुरुष मैं जानता हूँ इंडिया में, बहुत सारे ज्ञानी हैं, लेकिन आप Heart of Deimos, man. It's like been more than a year I've been trying to unlock this quest. लेकिन मैंने they are very experts in this. यही What? तो दिक्कत Okay. है। माइंडसेट नहीं है, हाँ। शत्रुबोध नहीं है। बिल्कुल। और शत्रुबोध में मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक के अगेंस्ट कुछ करो ना, तुम इतना The inbox has messages मैंने from the भूख लगा तो बहुत operator. कुछ बोला जा सकता है, Anything बट about orders in there? द पुनरुत्थान ऑफ धर्म Okay. इस लैंड में तभी मास मूवमेंट बनेगा। मास मूवमेंट और शक्ति पूजा। I like this game, and I like the whole thing, but धर्म यहाँ पे जगाओ, ये But- world but- wide but जगह there are तो some पहले buts, but यहाँ it's पे- fine. यहाँ पे जगाओ और Eee. जो समाज का जो लेटेस्ट से जैसे कि धर्म का जो है उत्थान Is your करवाओ mod collection in और order? इस संकल्प लेके No, पूजा I पाठ am करना। not equipped एक to जन नहीं, feel बहुत that. कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जुड़ना पड़ेगा इसमें। मेरा एक ग्रुप है कुछ साधकों का, एक प्राइवेट ग्रुप है, तो वो लोग ये माँ का और भैरव बाबा का अपने तरीके से पूजा करते What? हैं। कॉम्प्लिकेटेड पूजा का बात नहीं, मैं ये नहीं करूँ एकदम मतलब एक पैर पे खड़ा होकर 12 साल तुम्हें बैठना पड़ेगा, उससे से कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जमाना बदल गया Serious है jumps. और इस जमाना ऐसा बन गया है कि यहाँ पे आपका इंडिविजुअल ग्रोथ स्पिरिचुअली जितना हुआ है बहुत अच्छा है, मैं उसको सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उससे समाज नहीं बदलेगा। लेकिन आपको आगे बढ़ के जो कम से कम इस साधना में आगे हैं और लोगों से कम वो जागृति तो बनाएं। वही भाई, इसीलिए मैं एक फाउंडेशन बनाया हूँ इस साल, लीगली इट इज़ डन, नाम है कामाख्या भैरव उपासना। तो उसके अंडर काम हम लोगों का यही रहता है कि ज़्यादा ओनली जेन्युइन पीपल हु आर इंटरेस्टेड, हम लोगों को मैं थोड़ा सा बेसिक भैरव बाबा का उपासना, I'm interested. माँ कामाख्या बेसिक कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि लोगों को पता ही नहीं है। एक तो ये नहीं पता है कि किसका पूजा करें, क्योंकि अपना नहीं पता है। जब तक अपना नहीं पता होगा आप देव भी नहीं चुन सकते हो किसका उपासना करना है। दूसरा, Will I be able to beat him? कि ये ठीक है,
ये ठीक है तो क्यों है, क्योंकि सवाल तो आएंगे और कोई होना चाहिए ना उनको उत्तर देने Let's के लिए। find out. तो ये दिक्कतें हैं दो। तो What? 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 Okay. How did I mean, I know I grinded a little bit, but how did I? The तो आप inbox कह रहे has हैं दूसरे messages for the operator. Anything about orders in there? Sideshow's crates. The rail leader requesting a ship lockdown. Perform a deep scan for Lockdown. Everyone wants a civil lockdown and quarantine and lockdown. We want to normalize it in everything that we do in movies and games. Normalize people, normalize locking people up, normalize quarantines. You can't go here, you can't go there, normalize everything. And it's because we want to do that too in real life. We have to make you watch and play the games that normalize quarantining and locking up, stealing your freedoms, snatching them away right in front of your face. And you will do so willingly. What? Why am I... What? New local stressed out. Operator? Orders wonders, what are you thinking about? I'm wondering... How do I get a good experience with this game? Okay. Completed. Two very paradox, Heart of Demons, Stolen Dreams. And Venus. Got Venus. What is this War's Prize quest? What? So many of them? What? Raksha Cube. Kawat is a cat. Kubro is a dog. Predacite. Helios Prime. That's Cube Prime. There's some Saturn Cube worship here and some Sun worship right here. That's Cube. Ugh. My Kubro looks like this one. And there more are worm. Okay. I want all the prime ones. So many of them. Massive prime.
Damn, look at that. Look at that. Reminds me of Loba from Apex. Bold Widow. Amisha. Odonata Prime. Wow, man. How did I get Hydroid Prime? I don't remember how I got it. So far it's been really overpowered. Visit Cambrian Red. Gotta make me a Cambridge. Parsley, sage, rosemary. Remember me to all. To one who lives there. She once was a true love of mine. You condemn our appetites, yet fail to retreat from your own. Okay. This is the main final Terrorium survival. 1, 2, 3, 4. What is my level? I don't even know. आप कह रहे हैं सोल्व करने की नहीं, कोशिश है। मैं बोल रहा हूँ कि दो चीज़, ये स्टेप 1 सिर्फ साधना करने से नहीं होगा। जैसे साधना करने वाले तो बहुत लोग हैं, बट मेरा अपने तरीके से कोशिश यही है कि टू एक ग्रुप ऑफ साधक बनाओ, सिंपल साधना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जो कर पाएंगे, और एक The area is आने के crawling with बाद infested. If it's not a फिर 10-0, ग्रुप में eradicate it. बैठ के अब संकल्प लेके साधना करो, और विशेष जगह पे जाके, विशेष स्थिति में कि धर्म का जगह पे जाके करना पड़ेगा। जैसे, और ये इसका अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, जिसको मुझे ये अंडरस्टैंडिंग वो समझ में नहीं पड़ा। आपको एग्जांपल मैं समझ गया। तो इसको एटलीस्ट हम लोग सब बैठ के मेरे बाबा मास मूवमेंट, दिस इज व्हाट हाँ, जिस I'm तरीके still से जैसे detecting a lot of infestation activity. शिव Let's की clean है, it up. आज जो एक बहुत पॉपुलर चीज़ है कांवड़ यात्रा नॉर्थ इंडिया में, बहुत मास मूवमेंट से मतलब लाखों लोग जाते हैं, अपने अपने गांव के मंदिरों में कांवड़ लेके आते हैं। दैट कनेक्ट्स, दैट कीप्स यू रूटेड। अब इस तरीके का ये साधना के लिए भी होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, है ना? वही पैरेलल है ना, ये वही पैरेलल है। हाँ। बस इसमें क्लैरिटी एक आध चीज़ का होना चाहिए कि पहले तो एक साधक बनना है, साधक की तरह सोचना है, और लाइफ बाकी समय आप अपना साधना करो, अपना जो प्रॉब्लम है तुम देवता को बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो करना है करो, लेकिन कुछ विशेष समय बाई एक्सपेक्टेशन जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसमें, उनसे उनको पता भी है इस समय पे विशेष जगह पे एकत्रित होके साधना करना है। साधना अपने लिए नहीं करना है, साधना धर्म के लिए करना है, और कुछ Stay जगह पे focused. जाके करना There's a है, heavy unit कुछ approaching. अपना संकल्प है उसमें, कुछ संविधान में इसलिए तो इस समय पे हम लोग एक्टिविटी हर एक्टिविटी यही संकल्प धीरे धीरे कैसे नहीं होगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वैसे एज अ लार्जर सोसाइटी। और जो
इंट्रिकेसीज हैं स्पिरिचुअली वो आप जानते हैं, लेकिन एज अ सोशली आई कैन सी द बेनिफिट्स, वो भी जरूरी है। वो एक आखिरी में एक वो बता दीजिए कि अपने आप को कैसे जाने, क्योंकि उसके बिना तो फिर कैसे देव को नहीं, पूजोगे? अपने आप को जानना मतलब अब क्या समझते हो? ये कोई तो आइडिया होगा कि मैं चाहता क्या हूँ, गोल क्या है मेरा? बहुत चीजें हैं ना। Like दिक्कत what? यही तो है, यही तो भटकते हैं लोग। Like what? मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है अपने आप को कैसे जाने, नहीं, इन द सेंस टू विच डाइटी टू वर्शिप, इन हाँ। दैट सेंस। मेरा वही मैं बताने वाला था exact। तो सिर्फ अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि अपने आप को कैसे करें, तो ये वेदांत में हाँ वो तो हाँ, मेरा वेदांत से कोई चीज नहीं है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ original वेदांत, लेकिन मुझे मेरा मानना ये है कि एक्चुअल वेदांत के जो मार्ग और जो अनुभूति है वो 90% लोगों के लिए संभव नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वर्बल वेदांत में चले जाते हैं। हाँ, सब ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण है। अरे सब ब्राह्मण है, फिर कोर्ट बंद कर दो, पुलिस बंद कर दो, फिर तो कोई है ही नहीं दिक्कत। तुमसे अगर कोई आके हमारे पर्स चोरी करके लेके जाए, कुछ मत करो, वो भी ब्राह्मण है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो दैट इज वाई श्री अरविंद यूज्ड टू से कि सब कुछ खत्म होने के बाद वेदांत के जो रियलाइजेशन है वो सही है, लेकिन उसके पहले अगर लगा देते हो तो फिर सीधा नरक पहुंच जाए। ठीक है, इसीलिए अब ज्ञानी जनों को ये तो अंडरस्टैंडिंग था ना, इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 दे के गया, बोला नहीं कि बाकी 3 छोड़ के सिर्फ मोक्ष के पीछे भागो। ये 3 नहीं होगा तो मोक्ष ऐसे भी नहीं आएगा तुम्हारा। धर्म पहले चीज़ है, धर्म आएगा तो बाकी सब आएगा। काम नेचुरल ह्यूमन कोर्स में काम के इम्पोर्टेंस है, तो दुनिया ही नहीं चलेगा। काम अर्थ भी चाहिए, क्योंकि वो तो सामर्थ्यवान बनाता है, बिना अर्थ के कुछ नहीं होगा, तो टीचर भिखारी बन के घूमते रहोगे। और फिर ये सब हो गया, समय पे मोक्ष अपने आप आएगा, जल्दी नहीं है, करते रहो। भगवान Oh, स्वयं man. इतना बार अवतारित होते रहते हैं, तुम और 10 बार 100 बार लाइफ हो गया, इनकारनेशन हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन देवता उपासना अगर करें, मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट चीज़ है इस जमाने में लोगों को, फॉर ऑल पीपल। क्योंकि कोई भी एक इष्ट देवता जो है, आप जिनके ऊपर आपका भक्ति है, हाँ, ज़्यादा पे है तो, हाँ, ज़्यादा पे है तो एक से ज़्यादा, हाँ, एक से ज़्यादा भी समय नहीं मिलेगा आपको करने का। एक जन को अगर कुछ कंफ्यूजन है, ऐसा 3-4 देवता को अच्छा लगता है, इष्ट देवता मतलब सिर्फ अच्छा लगता है मुझे तो, इतना देवता सबको, आई लाइक ऑल द देवता, लेकिन 3-4 ही है उनके साथ मेरा सब कनेक्शन है। चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, वो 3-4 का पूजा मैं नित्य करूँगा, वो कभी रुकने वाला नहीं है। बट वो कैसे आप हाँ, डिसाइड? अगर शुरू में आपको कुछ लोग होते हैं, Stay focused. Yeah. There's a heavy unit approaching. ये राम सिंपल वे में पूजा का ऐसे पद्धति है, शास्त्र में लिखा हुआ है, जो पद्धति के लिए कोई गुरु का जरूरत है। But you need this patience. और ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि discipline What? एक दिन कर दिया, 10 दिन कर दिया, 6 दिन मेरा कि हो गया, वो रहेगा नहीं आपके साथ। 3 से 4 साल अनुरोधन करना है। उसका कौन डायरेक्शन देगा, किस चीज़ का? कैसे करना है शुरुआत? जाएगा आपको। आज के मैं क्या बता रहा हूँ, आज सब वो नहीं, करना, वही है ना, जो गलत बताने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, वो आ जाएगा। उसके लिए मैं आपको बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ, आपको कुछ करना चाहिए इसमें। नहीं, मैं अपने तरीके से मैं करता हूँ, जितना मेरा टाइम में संभव हो, क्योंकि इतने ज़्यादा न्यूज़ वगैरह से बातें रहती हैं। बट आई कोई एक प्लेटफॉर्म तो हो, मैं कोई भी आता है ना, मुझे कोई पूछता है, और मैं रिपीट फिर भी यहाँ पे और सुन रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि एक ही क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा देवता का पूजा करो, तो स्ट्रेट गणपति का पूजा करो, नंबर 1। और कैसे पूजा करोगे, अलग से स्तोत्र ले लीजिए, या 108 या 1000 सहस्त्रनाम, ये बताता हूँ, सहस्त्रनाम दिया हुआ है आजकल, ऑल अवेलेबल है ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। या कोई चौखा मत लीजिए, कोई गीता प्रेस चलिए, आपको तो 50-60 रुपये में मिल जाएगा, कुछ है ही नहीं, प्राइस भी नहीं है उसका। 1000 नेम जो वीडियो होता है, वो पाठ करना चालू करें। टाइम लगेगा शुरू में, 45 मिनट 1 घंटा लगेगा, धीरे धीरे अगर शुरू लग जाएगा 40 मिनट का आपको होगा। अच्छा, सिंपल आसन में बैठिएगा, 3 बार विष्णु भगवान का नाम लेके आचमन करना है, क्योंकि विष्णु का नाम लेने से शुद्धिकरण हो जाता है, मानते हैं। 3 बार पानी लेके आचमन कीजिए, फिर एक दिया, एक अगरबत्ती, कुछ नैवेद्य, भोग, मिठाई या कुछ रख दीजिए सब, फिर गणपति का 1000 नाम पाठ कीजिए। और
अनब्रोकन करते रहिए 6 महीने 1 साल तक कीजिए अनब्रोकन। हो ही नहीं सकता कि आपका कुछ अनुभूति नहीं होगा, कुछ रिजल्ट कुछ डायरेक्शन नहीं होगा। या तो आप छोड़ देंगे बीच में, ये ज़्यादा Finally, after 10 years, कंटिन्यू फॉर 1 ईयर पॉसिबली। after like what seems like a fucking eon, where मान लीजिए Cthulhu कि was आपको sleeping and now he's इष्ट देवता waking up, it seems like I'm लेकिन आप finally गणपति पूजा चालू doing the mission that I... Whoa, that looks good. I want to see that again. I want to see that again. I think I can see that every time I land here, or is this just a one time? What? Damn, these graphics look good. Why am I not playing it on 4K? Or is it on 4K already? It looks 4K for some reason. Tenno. You received our distress signal. Mother will be pleased. What? Visitors? Look at you now, a real chip off the old monolith, huh? Just the right sort to save us from the coming cataclysm. Come on! We agreed. I was handling orientation protocol. Sorry, Lloyd. It's just too exciting. We are in crisis, Tenno. Our defense against the Grey Strain has failed. The Necrolisk is in lockdown, but it doesn't matter. The infestation has compromised the very heart itself. We have been forced to rephase into Martian... But how are you, anyway? Things good? As I was saying, our defense situation is dire. Our remaining necromechs have reverted to their autonomous kill precepts. They will not distinguish you from those things. Those animations are so cool. It is imperative you meet Mother, receive her instructions, and prevent the imminent intradimensional catastrophe. Demonstrate your combat readiness, and I will grant you the requisite security clearance. Good luck. Intradimensional? What? Oh, Tech, I've already explained it. Sounds like it bears repeating, Lloyd. बात नहीं, समय में ही विल ओनली कनेक्ट यू। ऐसे कोई व्यक्ति से या ऐसे कोई प्रेरणा आएगा आपके पास, ऐसा कुछ आएगा कि अभी मुझे शिव उपासना करनी है। और गुरु जब आना है तब आएगा, गुरु के पीछे जब गुरु आएगा तब मैं चालू करूँगा, ऐसा नहीं। मेरे हिसाब से सिंपल पूजा पद्धति जो है वो सबके लिए दिया गया है। और देवता का नाम, अष्टोत्तर नाम, सहस्त्र नाम, देवता का नाम जपने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। ये सबके लिए ओपन किया गया है। आज जो महामंत्र है वैष्णव का, वो तो नाम ही है एक तरह से ना, कृष्ण राम, हरे कृष्ण नाम है। सेम वे में कोई भी देवता हो, इवन अगर मैं किसी को भैरव उपासना सिखा रहा हूँ तो पहली चीज में वो तो If we were unclear, demonstrate your readiness by destroying infestation. Oh. Only then will I grant entry clearance. Act accordingly. ये नाम ही है, नाम में बहुत शक्ति है। संस्कृत में नाम ही मंत्र होता है। हाँ, एक विचार पूरा करना जरूरी होता है यहाँ पे कि आप अगर बहुत सुनिए के व्यक्ति हो, आपको माँ काली या किसी माता का नाम लिया तो वहाँ पे एक नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है। वो देवता के लिए नहीं होगा, आपके माइंड के लिए। Oh no. माइंड में वो डर है। अगर डर है तो माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड आपके साथ जब कोऑपरेट करना चालू कर देगा, साधना क्या, दुनिया में सब कुछ है। माइंड कोऑपरेट नहीं करेगा तो सब में कोई ना कोई बाधा है। तो इसीलिए गणपति उपासना एक पड़ेगी, फिर किसी चीज़ का विचार करने की ज़रूरत नहीं होता है। ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है, ज़्यादातर लोगों के लिए जो लगता है एप्लीकेबल होता है, अगर बहुत सारा पितरों का संतुष्टिकरण के लिए जो भी पूजा पाठ है वो ज़रूर करवाएं। और एक जन करते हैं, सबका नहीं ज़रूरत होता है, फैमिली में एलिटेस्ट मेंबर करवाते हैं। अगर वो नहीं करवा पा रहे तो आप, और दूसरा बात है कि घर पे नहीं है, ये करना है तो वो क्षेत्र में जाके कीजिए। काशी, उज्जैन, गोकर्ण, त्र्यंबकेश्वरी, जो पितरों के लिए जो गया बद्रीनाथ मेन जो स्थल है, वहाँ पे जाके
पितरों का जो भी पिंडदान वगैरह जो बाकी है अगर नहीं किया गया है, अरे कुछ पितरों का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो पिंड वगैरह कोई पंडित जी को बुला के, तीर्थ पुरोहित को बुला के करवा लीजिए वो चीज़, क्योंकि पितृ प्रॉब्लम अगर किसी का है कोई देवता हेल्प नहीं करेगा। अब वो क्या है? वो जिसको हम लोग मानते हैं कि अनसेटिस्फाइड एंसेस्टर्स, जो आपके ही कुल में Damn, this podcast is getting intense. अनसेटिस्फाइड है, तो ना उनका गति हो रहा है, यानी रिवर्ट नहीं हो पा रहा है, तो तब उनका हाल ऐसा होता है कि जैसे कि आप और मैं पूरा बाकी नॉर्मल टेंडेंसी जो है, गुस्सा हो, जेलसी हो, लास्ट सब कुछ फीलिंग तो आता है लेकिन शरीर नहीं है। और क्या होगा ऐसे अवस्था में? फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन से एंगर बढ़ेगा, और एंगर डायरेक्टली आपके लगता है जो उनसे जनरेट करते हैं। तो 5 महायुद्ध के विषय में बोल के क्या, तो उसमें एक था पितरों का यज्ञ अर्थात संतुष्टि करना। तो आप लिविंग एंसेस्टर, तो आपका फिर ये धर्म बन जाता है कि कुछ ऐसा कुछ किया जाए ताकि जो पितृ जो फंसे हुए हैं वो आगे गति मिल जाए, मोक्ष नहीं, मोक्ष हम लोग सब मोक्ष करते रहते, मोक्ष नहीं, गति मिल जाए, या उनको रिवर्ट हो जाए। रिवर्ट होने से क्या, बॉडी मिल जाएगा, जो डिज़ायर है वो मिल सकता है, तो यही तो खुश हो जाएंगे और ब्लेसिंग आपके पास आएगा। तो इसीलिए बच्चों का अगर किसी का प्रॉब्लम चल रहा है और वो फाइंड आउट, आप जाइए कोई गुरु या पंडित जी से किसी से बात कीजिए, पता चल जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगले दिन से 1000 में लगा मेरे पास ना समय है ना मैं मेल बॉक्स खोल पाऊंगा, तो इसलिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि और बहुत लोग चाहते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग चाहते हैं कि कोई एसओपी बना दीजिए आप पूजा पाठ का, एक हर एक देवता का आप कुछ करके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डॉक्यूमेंट बना दीजिए। यही एसओपी में बता रहा था कि अगर पितरों का आप कर लीजिए, और अगर हाँ नागा डो नाग को भी ठीक है, नाग एक्चुअली वेरी कॉम्पिटेंट, अपना ही पॉडकास्ट नाग, बट एक तरह का दोष है नाग दोष है। नाग दोष अगर किसी का है तो ये वेरियस मीन्स की एक तो सब या वेरी बैड प्लस डिजीज, वो भी चीज़ अगर जिंदगी में कहीं चीज का नाम है तो उसका भी उज्जैन में तो होता है, साउथ में मैंगलोर में कुके सुब्रमण्यम मंदिर में होता है, अश्लेषा बलि कहते हैं, नाग बलि कहते हैं। ये सब चीज़ करवाना ज़रूरी है, ये कोई घर पे बैठ के चॉइस नहीं है। हाँ, कोई देवता तो ये करने से, जैसे कि आपका मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, एक ब्रेक लगाया हुआ है आपके लाइफ में, तो ये दो स्पेसिफिकली चीज़ जो है पितृदोष, पितृ प्रॉब्लम या नाग दोष, आप कोशिश तो कर रहे हो, 100% कोशिश कर रहे हो। अगर वैसा है तो इतना ठीक ठाक से पूजा पाठ जो भी है विधान उसके बाद इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट आपको कोई अनुभूति नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। मैं कभी देखा नहीं होगा। हाँ, ज़्यादातर होता है कि कंप्लीट नहीं कर पाया, 10 दिन बोर हो गया, तो अलग बात है। शास्त्र नाम जो होता है देखना वेरी वेरी ठीक से कोई करता है ना, जैसे कि एक मैं ये चीज़ कितने जन को मैं रिकमेंड करता हूँ, डिप्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, सुसाइडिंग थॉट्स आ रहा है, बहुत कुछ मायूसी जैसा, बेस्ट थिंग्स टू डू, कोई भी शिवलिंग में जाके, उत्तर भारत में तो ये ज़्यादा आसान है करना, कोई भी प्रतिष्ठा में जाके बेल पत्र पानी ये चढ़ाइए और वहाँ पे ही बैठ के शंकर भगवान का शस्त्र नाम पाठ कीजिए, डू इट फॉर 11 महीने, यू विल सी द इफेक्ट्स 100%। शंकर भगवान इज द माइंड को स्टडी करने के लिए उनका पास तंत्र साधना में भी चाहिए, वही चाहिए, वो ब्लेसिंग देते हैं तब माइंड स्टडी होता है, माइंड स्टडी होता है तो बॉडी स्टडी होता है, माइंड बॉडी आधार है, आधार स्टडी होगा तब जाके भगवती के जो उग्र रूप है उनको आप हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि वहीं पे तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा सामने महाकाली हार्ट अटैक हो जाएगा,
आपने जैसे अभी बात की कि गणपति की पूजा करने की, अगर आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं देख रहा था आपका एक एपिसोड में आपने कहा है कि मतलब वो पहले बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि किस तरीके से उनका भी एक है। हम तो अब तक ये जानते थे कि जो सबसे अच्छे काम करने के लिए, शुरुआत करने के लिए घर में उन्हीं की पूजा से ही शुरू होता है। और आपने जिस तरीके से बताया एक अलग चीज़ है, उसमें अलग पूजा गणपति भी है और सब है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये एक There's a यूनिक hive. एस्पेक्ट है कि Nuke जिसको हम it. एक दृष्टि से देखते हैं उसका एक अलग हाँ, जो गणपति सेक्ट के जो अंडर में जो लोग साधना करते थे, आजकल तो उतना वैसे कम हो गया है। लेकिन Okay, now that they're good and mad, hope you're ready. नॉर्मल गणपति है, महागणपति का मुझे जितना याद है कि भगवान गणपति का शायद तो साधना की गहराई में आप जाएंगे ना, तो ये सब चीज़ इस चीज़ को जस्ट अभी मैं जो बताया शास्त्र उससे वो है स्टेज 1। ठीक है, अगर कोई गणपति के पास तो फिर मंत्र का फिर गणपति का शुरू में नहीं है आइकोनॉमी के चक्कर में Got 666 credits. शेरी तो है ना लायन, न वो चीता है। टाइगर क्या है? चीता चीता तो अलग है ना, स्पॉटेड बाघ करेक्ट। तो शेर के ऊपर गणपति बैठा हुआ है। हाँ, हमारी हिंदी भी आपकी हिंदी से कुछ खास अलग नहीं है। तो It's gone all quiet. That means we won! Clearance approved, Tenno. I now grant access to the necrolis. I didn't like doing Mother that. awaits. I think there was something like a baby inside that thing. There was something like a baby inside that thing, and these two psycho pieces of shit flying in the air telling me to kill something and do this and that, and like they're fucking, like I'm their fucking errand boy, huh? I think that's what the game is conditioning me to become, an order follower. An order follower. It's very fierce. उग्र स्वरूप है और इनको इन्वोकेशन प्रोटेक्शन चाहिए। कोई अभिचार हुआ है, कोई स्पिरिट प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ एनिमी नेगेटिव है, कुछ है, तब उनका पूजा किया जाता है। मूव ऑल है। नेपाल साइड में काफ़ी पूजा होता है। कामाख्या में This level is fucking amazing. This level is too good. बहुत काम। It is so fast. Oh my god, what the hell? प्राण प्रतिष्ठित हिरंबा मूर्ति विशेष मंत्र से अगर प्राण प्रतिष्ठित, बस आप घर के सामने रख दीजिए, कोई नेगेटिव यहाँ पर आपके कुछ नेगेटिव ऐसा प्रोटेक्शन होगा। हाँ, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा आना चाहिए जो कर रहे हैं, बना रहे हैं वो चीज़ को ये पद्धति से। तो ये हिरंबा गणपति हो गए, वेरी पावरफुल फॉर्म। अच्छा, और एक गणपति जो आसान भी है, हरिद्र गणपति। हरिद्र मीन्स हल्दी। अच्छा, इनका पूजा हल्दी से बनता है गणपति, ये खुद बना सकते हो। एक दिन का पूजा होता है, हल्दी में थोड़ा सा आटा या मैदा लेके पानी लेके गणपति का आकृति दे दो, फिर उनको Just like 10 on 10 level design. I would give it 10 on 10. और हो जाए सनसेट के समय पे तो विसर्जन करो। I would give it 10 on 10. जितना नेगेटिव और एक गणपति है जो बहुत ही रेयर है, वो इंडिया में बहुत मतलब होता ही नहीं है, वो अघोर गणपति जो आई थिंक विच आई टॉक्ड अबाउट प्रीवियस टॉक्स। तो अघोर गणपति का पहले तो चिन्नाराम आश्रम के अंदर एक अघोर गणपति का विग्रह रखा जाता था। अघोर गणपति है, जैसे नाम से ही पता चलता है कि अघोर वर्ड आता है भगवान शंकर से। उनका 5
जो स्वरूप है उसमें से एक है अघोर, जो दक्षिण की तरफ जो है उनको अघोर कहते हैं। ऐसे अघोर का मतलब है कि जो घोर नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन एक तरह से वही सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्वरूप है भगवान का, ठीक है। तो उसी से अघोर ही आता है, ये आता है, सब कुछ उसी के इंस्पिरेशन से। दक्षिण के दिशा में फेस करता है, क्योंकि दक्षिण से Talk to mother. What? Is this the mother? This was. Oh my. This is the mother of the infestation. Nanospores. Oh my. Look at that. Okay, look at that. Reminding me of Returnal. Oh god. It's just beautiful. Ten on 10 level design. I like everything about it. I don't care what anybody says. Why is it slowing down? What? I thought I was supposed to talk to mother? I was just supposed to kill her? What the hell? See, this is what, there's no resolve to the missions. Or is there, or maybe there is to some. Nigga, join, nigga, join. Hey, how do I? Emote, how do I? I don't know what. How do you do emotes in this game, bro? Just make it easy. Just make it easy. Unbind. Unbind. How do you unbind? Why is it so bad? Oh no. Aim weapon engine. Oh my god. Oh. F2. Why is okay?
No idea what the hell is going on. How do you do an emote? तो यम आता है, मृत्यु आता है, मृत्यु को रोकने का क्षमता रखता है इस रूप में। तो अघोर गणपति भी वैसी है, और उनका जो स्वरूप है उनमें आपको पूजा में कारण देना पड़ता है। कारण होता है रिचुअलाइज्ड अल्कोहल। अच्छा, So it's cute. नॉर्मल अल्कोहल नहीं, अल्कोहल को लेके फिर उसको उसके ऊपर मंत्र इत्यादि स्तुति बहुत कुछ पूजा पाठ करके उसको शुद्ध करना। Q is for emotes. कारण कहते हैं, कारण ऑफरिंग दिया जाता है। इसमें नॉन वेजिटेरियन ऑफरिंग भी चलता है, लेकिन उनका अघोर रूप है और वो रूप स्मशान में भी जा सकता है, लेकिन वो अघोर गणपति का रूप का पूजा आप घर पे नहीं कर सकते। कोई भी स्मशान के देवी का पूजा घर पे करना सही नहीं है। माँ काली का भी बहुत सारे रूप है, माँ काली का स्मशान काली का घर पे नहीं पूजा, तो माँ काली का भद्र काली और भी कुछ है, एक आध थोड़ा सा सौम्य है, वो आप घर पे कर सकते हैं। सिमिलरली एक है उच्छिष्ट गणपति। उच्छिष्ट गणपति जो साउथ में पॉपुलर है और स्ट्रीट वाले में स्ट्रीट यूज होता है। उच्छिष्ट गणपति का प्रधान ये भी एक तरह से वामाचार वाम मार्गी गणपति है। इनका पूजा उच्छिष्ट गणपति का पूजा वामाचार पद्धति से होता है। इसमें पंचम तत्व का काफ़ी इम्पोर्टेंस आ जाता है। पंचम तत्व में 5 तत्व है, पूजा होता है पंचम अगर पूजा में। पंचम तत्व है जो उसको सेक्स कहते हैं, उसको पंचम कहते हैं टेक्निकली। और जो प्रथमा इज योर अल्कोहल, कारण ऐसे, ठीक है। पंचम है तो पंचम इनिशिएटेड डिसाइपल, इनिशिएटेड साधक और हस्बैंड वाइफ या जो भी है साधक, दे कैन डू द पंचम तत्व यूजिंग महा उच्छिष्ट गणपति मंत्र साधना। ओके, एंड उच्छिष्ट गणपति का एक है कि बहुत फास्ट है, बाकी गणपतियों से काफ़ी फास्ट है, लेकिन बिकॉज इट इज़ वामाचार, वामाचार देवियों का नियम ये होता है कि वो दे आर प्लेफुल। माँ कामाख्या भी वैसी है, वामाचार का देवी है। वामाचार पद्धति में पूजा करेंगे ना, वो डेकोरम वैसा नहीं चलता है। दक्षिणाचार में एक डेकोरम होता है, जैसे कि आप घर पे जा रहे हो, घर पे फादर के पास आप जा रहे हो तो एक रिस्पेक्ट के साथ हाँ प्रणाम कर लिया, जब ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकते हो। एक पुराने ज़माने में जैसे कंजर्वेटिव आइडिया था ना, कंजर्वेटिव आइडिया में देवता जब आते हैं वो कंजर्वेटिव पद्धति से। मोमेंट आप वामाचार कर रहे हो, और वामाचार पहले तो हाँ देखना पड़ेगा कि वो देवता के लिए सूटेबल है। आप कृष्ण भगवान के लिए वामाचार नहीं कर सकते, एटलीस्ट अभी का जो पद्धति है। तो इमीडिएटली उन लोगों का नेचर बदल गया, तो दे विल बी वेरी प्लेफुल ऑल्सो। और है कुछ कुछ और डिटेल्स, आई डोंट गो इनटू दैट, बट सो ये सब है महागणपति का अलग अलग रूप। और अभी भी लोग हैं। The infestation wormed into everything. After the Great Purge, there were no Dax, no Tenno to defend the place. Just us. It's not your fault, Ship. Technically, it is. And now you face an existential threat. If the heart stops beating, the wellspring of your power dies with it. Have we tried turning it off and on again? Tenno, meet the head of the Entrati family. What's left of her, anyway? Mother, wake up! Okay, that's gross. Looks Why do they have a humanoid? Is she merged? Oh, Lloyd. I had the most distressing dream. Here we go again. The wall of Loke was before us. I had my proofs. My father's. I could hear him. I could hear him tapping at the untimed door. Mother? We went in, but again, he wasn't there. My husband congratulated me. Sarcastic halfwit. All the while, hiveweed was sprouting all around us. But it was just a dream. No, Mother. You did all of that. You're as wormed as the rest of this place. The heart is about to fail, remember? Oh, fuck. Functional? We are. And we've summoned Ship here to help us. It'll take more than an old Orokin thug to keep the heart beating.
What? Same as Deimos. The infestation got in. Got to me and my family. Stole our names, our ideas. What? I can hear its What? high voice scratching in my mind. Let the heart stop beating. Let the door close forever. Fuck off with this Only my gaslighting. dreams seem real now. So Gaslighting, like shit. I sleep. Maybe I should sleep too. I don't blame you. You're just the product. The Orokin had no respect for my father's work, though I suppose you proved him right in the end. Who the hell is she? I have no idea, bro. It's what makes you special. You know that, right? All thanks to my father. It pumps the arteries of the here and the void. The Entrati family has maintained it for an age, but it's breaking down, and only that idiot knows how to fix it. The man I used to call my husband. I think he's left for good this time. Maybe you can find him. Probably sulking somewhere outside. Probably pissed him off, said some stupid shit to him. Seems like the type that's crazy. Crazy. She definitely had the crazy eyes. Wait, now I can? What? Detecting active necromech signals nearby. It could be father. He loves a good fight. Whatever you do, don't mention mother. Nothing he hates more. I don't know what why it's what the crazy lady do. What did the crazy lady do? I don't know. Why is the music getting... What? What? Oh, it's this because of this thing. I want to listen to the lecture. This must be one of the last of Father's necromechs. It won't last long. Its struggle is a valiant one, but I fear the worst for our metal friend. I tried to save it. Rest well, noble warrior. May you someday rise again. Now, to business. Okay.
guidance signal was coming from over there. From over there, from there, from over there. What? So I entered Father's Lair a little earlier than they expected, huh? Good. आखिरी सवाल है इसमें जैसे बीज मंत्रों के बारे में बात होती है कि शक्ति है उसमें हनुमान चालीसा है जैसे वो तुलसीदास जी ने लिखी और कई शताब्दियों पुरानी भी हैं सहस्त्र वर्ष पुराने भी हैं कुछ मंत्र होंगे तो क्या ये कब मंत्र बनता है इस पे भी डिपेंड करता है क्योंकि हम बोलते हैं कि ये मंत्र पावरफुल तो वो उसकी जो शक्ति है वो कहाँ से आती है क्या वो पुराने होने पे आती है या कुछ और चीज़ है या सिर्फ लाइक मतलब आज कोई मान लीजिए कल कोई मैं या आप रचित कर दें कुछ तो क्या उसमें भी पावर होगी या सब ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एट द एंड क्या क्योंकि जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ मेरे मन में ये आता है कि 1000 साल पहले ये नहीं था हनुमान चालीसा नहीं थी तब क्या मैं सही बात सो पहला आपका रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग में आपका मतलब जो एनीबॉडी नॉट पर्सनल कि ऐसा एक हम लोगों का बिलीफ होता है कि जो चीज़ बहुत पुराना है उसका मतलब वही सत्य ऐसा नहीं है एक तो तंत्र भी नेगेट हो जाता है तंत्र तो बाद में आया वो पद्धति है लेकिन ट्रुथ जो है कभी भी आ सकता है देवताओं से रिवील हो सकता है देवताओं से ठीक है समय के हिसाब से देवता बोलते हैं कि अच्छा अभी समय है इस सत्य को लोगों तक पहुंचाने की ठीक है ऐसे हो सकता है अगर मान लीजिए कृष्ण भगवान मुझे अभी वो महाभारत डेटिंग में नहीं फंसना है हाँ। तो मान लीजिए 5000 साल पहले उनका बर्थ हुआ था तो 10,000 साल पहले तो जो लोग रहते थे 10,000 साल में वो तो कृष्ण का नाम सुना ही नहीं तो फिर वो भगवान नहीं मानेंगे तो क्या भगवान कम हो गया फिर भगवान तो भगवान ही है तो ट्रूथ इज़ नॉट लाइक दिस ऐसा नहीं कि जो बहुत पुराना है वो सत्य है और बाकी अभी जो आया वो गलत है नहीं ना ऐसा है कि जो अभी आया है वो ही सत्य है और जो पुराना है वो गलत है ये भी नहीं सत्य कभी भी रिवील हो सकता है देवता का मर्जी है देवता का अपने अंडरस्टैंडिंग कंपैशन में वो देखते हैं कि मनुष्य के लिए इस समय पे ये सत्य को रिवील करना चाहिए Fight well for a runt frame. If you're ever interested in something a little more old war-sized. Wait. She didn't send you looking for me, did she? I am not going back. Look. You were the second wave, kid. The necromechs were void shielded, sentient pulse immune. As bright as a bag of hammers, and just as dependable. Not like you. When I met her, Mother, she was as brilliant as she was broken. Chasing her father's ghost, convinced he was still out there. I thought I could fix things. I thought I could fix her. Like she was a loose light board or leaky hydraulic. So yes, she's right about me. I am an idiot. But I'm a reformed idiot. I'm done with her. This heart is breaking down,
is just another tactic of hers. Don't you see? Everything has to be about her. That went well. We must prove to Father that the heart is deteriorating. This will be more dangerous than any Grey Strain monster we faced. We have to talk to Daughter. Oh no. घाटी करना चाहिए। कोई एक योग्य पात्र व्यक्ति संत के थ्रू इंस्पिरेशन आता है कॉन्शियसनेस में, और फिर वो ये दूसरा है कि मंत्र कैसे बनता है। वो तरीका है कि ऋषियों ने बनाया या सीखा है। जब वेद के मंत्र में है वो देखा जाए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वेद है अपौरुषेय, अपौरुषेय असल में किसी ने नहीं बनाया है, ना ऋषियों ने भी नहीं बनाया। और ये अपौरुषेय तत्व आता है जब बौद्ध महापंडितों के साथ जब तर्क होता था। आपको वो पुस्तक में आपको मिल जाएगा, न्याय और विशेषता और मीमांसा संप्रदाय के जो महापंडित होते थे हिंदुओं में, लोगों के बीच में तर्क होता था। उसमें एक पॉइंट ये आ जाता था, बौद्ध लोग बोलते थे कि पुस्तक में जो चीज़ लिखा हो गलत भी हो सकता है, पुस्तक का क्या गलत मिस्टेक नहीं हो सकता है उसमें, वो कैसे आप ले सकते हो कि वो सही है। तो फिर सही और गलत कौन फैसला करेगा? वैसे व्यक्ति जिसमें ओमनीपोटेंस है, ओमनीसियंस है, ओमनी प्रेजेंस है, ये तीन स्वभाव जिसमें आ गया, तीन गुण जिसमें मिल जाता है, वो अप्तवाक्य है, उसका वाक्य ही प्रमाण है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? गौतम। ठीक है, यहाँ पे काउंटर है, कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग आपकी गौतम कभी 100% करेक्ट हो ही नहीं सकता। मनुष्य योनि में पैदा हुआ है, गलती होगा ही। हम लोग ये ले ही नहीं सकते कि एक व्यक्ति, हाँ हो सकता है कि वो बाकी लोगों से ज़्यादा एडवांस है, बहुत कुछ है, बहुत बड़े योगी संत लोग हैं, लेकिन कभी गलती नहीं किया ये। तो क्या ये बात विष्णु अवतार जो हुए हैं? नहीं, आप सुनिए, बात सुनिए आगे। ये कॉम्प्लिकेटेड थियरी है और वेरी फैसिनेटिंग। तो तब वो लोग बोल रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? तो हम लोग ऐसा चीज़ को मानते हैं जो कोई मनुष्य के दिमाग से आया ही नहीं। वेद का जो तीनों तरह का जो ऋक, यजुष और समन, तीनों जो तरह का ये है, 50 श्लोक इत्यादि जो है वेद में है, ये चीज़ किसी के दिमाग से नहीं आया। कहाँ से आया है? ये ईथर में, जैसे सूक्ष्म जगत में ये इटर्नली एग्जिस्ट, वो है वहाँ। ऋषि का काम क्या है? ऋषि बस डाउनलोड करके लिखे। ऋषि ने नहीं बनाया ये, विश्वामित्र ने गायत्री नहीं बनाया, गायत्री था, उन्होंने देखा है, देख के वो चीज जगत दिव्य दर्शन हुए और एग्जैक्टली इसीलिए दृष्टा दर्शन आता है। ठीक है, तो इट इज इटर्नल। तो वेद के मंत्र इस संदर्भ में यहाँ से आता है, दिस इज द वैलिडिटी ऑफ वैदिक मंत्र, कि वो इटर्नली एग्जिस्टेंट अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब उसमें कोई ह्यूमन फैक्टर आ ही नहीं रहा है। ह्यूमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? एक बुद्ध है, 10 बुद्ध है, 100 बुद्ध है, वेद तो एकदम वेद ही है, वो चलेगा, ऐसे ही चलेगा। और कैसे वो अपौरुषेयत्व और कैसे वेद मंत्र को डिटरमिन किया जाए, अर्थात इसको कैसे एक्टिवेट किया जाए, इसको
कैसे, हाउ डू यू रीड इट? जब वेद अब पढ़, ऐसे ही आजकल तो फैशन हो गई, वेद खोल के पढ़ लिया, ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन, कोई मतलब नहीं है इसका। तो उसको वेद अप्रोच करने का एक पद्धति है, टेक्नोलॉजी है, मेथडोलॉजी है। वो मेथडोलॉजी आएगा, जब नहीं आएगा आपको, इनफैक्ट जब तक आप जैमिनी सूत्र के अध्ययन नहीं करेंगे, और डायरेक्टली करके भी आपको नहीं आएगा, फिर आप गुरु के पास जाना पड़ेगा। और गुरु तो आपको ऐसे नहीं सिखाएंगे, उसका बहुत क्राइटेरिया है, वो लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी एक अगेन लिटिल डाइग्रेशन, क्योंकि बोलते हुए मेरे दिमाग में आ रही है सब चीज़। जैसे आज लोग मानते हैं अग्निहोत्रम, एक समय पे इंडिया में काफ़ी जगह ब्राह्मणों के घर में होता था, आजकल बहुत कम होता है, शायद ही 100-150 लोगों का अग्निहोत्रम मेंटेन कर पाता है, नित्य अग्निहोत्रम जो होता है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो सिखाते हैं कि अग्निहोत्रम सब कर लो, सब कर लो, अग्निहोत्रम कर लो। वैसा नहीं है, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अग्निहोत्रम का एक तो जो पद्धति है वो, इट इज़ नॉट दैट इट इज़ डिफिकल्ट। जो मंत्र है 5-10 मंत्र बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन उसके साथ accompanying लाइफस्टाइल चेंजेस इज इम्पॉर्टेंट। अग्निहोत्रम जो व्यक्ति कर रहा है, अर्थात अग्नि को जो रोज पूजा कर रहा है, अग्नि के माध्यम से पूजा कर रहा है, वैदिक पद्धति से सुबह कर रहा है, और इवनिंग में जो सनसेट के समय पे, अब संध्या जिसको छोटा वर्जन बन गया है, नहीं, ओरिजिनल जो अग्निहोत्रम था समय पे जो कर रहा है, इत्यादि कर रहा है। पहला चीज है कि अग्निहोत्रम में आप अपने लिए कुछ नहीं मांग सकते। वेद का यही प्रधान चीज है कि इदम नाम, मेरे लिए नहीं है, वो धर्म के लिए है। क्यों धर्म के लिए? आप इंद्र को जो पूछते हो, कभी आप सुने हो कि इंद्र का, वायु का, वरुण का पूजा हो रहा है? फिर जैसे आप लोग आज बोलते हैं ना, माता आ गया, इंद्र आ गया किसी के बॉडी में, आया है? कभी नहीं आया ना, क्योंकि वो अपने कम्युनियन के लिए पूजा नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वैदिक पूजा, वैदिक देवताओं के साथ कनेक्शन, और पौराणिक देवता के साथ कनेक्शन। पौराणिक देवता इंडिविजुअलाइज जा सकता है, वैदिक देवता नहीं आएंगे। तो उनका काम क्या है? आप पूजा क्यों कर रहे हो? आप इस प्रक्रिया से, इस रिचुअल से, वैदिक रिचुअल से आप उस देवता का ऊर्जा जो है इंक्रीज करें, उनको प्रेरणा दे रहे हो। उनको प्रेरणा देने से क्या होगा? वो जो है सेट ऑफ देवता, एक नहीं, इंद्र है, वरुण है, सोमा है, जो है रुद्र है, वैदिक विष्णु है, जो है वो अपना काम ठीक से करेगा। क्या करेगा? धर्म रक्षा करेगा, अपना धर्म जितना उनको दिया गया, उनका डोमेन है, वो धर्म रक्षा करेगा। तो यूनिवर्स में धर्म मेंटेन होगा, आप यूनिवर्स के एक पार्ट हो, आपका लाइफ भी सही चलेगा। ये है वैदिक क्रम पूजा का। वहाँ पे कुछ मेरा जॉब नहीं लग रहा है, थोड़ा इंद्रदेव एक लगा दो, एक नौकरी, ये सब नहीं चलेगा, ऐसा सिस्टम नहीं, ठीक है। वो आता है पुराण से, पौराणिक पद्धति से। अब भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये करेक्ट और फॉल्स, ऐसा नहीं, ये दृष्टिकोण अलग है, और इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। नहीं तो आपको आधा रिचुअल का मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा, क्यों कर रहे हैं। ऐसे भी ज़्यादातर लोगों को आता भी नहीं है मीनिंग, ऐसे ही मैकेनिकली करते रहते हैं। आपने एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है बुक में। हाँ तो अभी आ गया पौराणिक सिस्टम में। पौराणिक सिस्टम में आप पूछ सकते हो देवता को, कोई इसमें कोई ये नहीं है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा इत्यादि है। तो वैदिक मंत्र का वैलिडिटी इसलिए था क्योंकि वो इथर में ऑलरेडी एग्जिस्टेड। पौराणिक मंत्र का वैलिडिटी इसलिए है क्योंकि ये इट हैज बीन सीन, रिवील्ड नॉलेज बाय शिवा। This would be where I showed you my birthright of ancestral fish, but, well, you've already met my charming brother. Some remnants of the original genetic matrix appear to have survived in the exocrine, though the infestation is steadily claiming them. If you can catch any and bring them to me, I'd appreciate it. We can salvage anything useful. I can't undo what he did, but I won't let him have the last word. Oh, aren't you a fascinating specimen? Organic ferrous exoflesh, hybridized internals, untime trace. You're a Tenno, aren't you? You need me to tell you where it is, which I wouldn't have to bother with if not for my parents, whose collective heads are so far up their collective lower sigmoids, the only air they breathe is what they secrete. By all means, go fishing unprepared. When I pick you out of a Cryptosuctus's gut sack, I'll be sure to say hello. Oh, that's
kind of sweet, but look at us. We are beyond help. The disease vectors are too complex, changing faster than I can study them. We can only prolong the inevitable. Look, if you help me get back some of what my brother Disease shredded, vectors. I'd be happy to return the favor. Deal? Already programming you for the 2020 bat disease that was released onto the public. It's not a disease at all. There was no such thing as that kind of disease. Just a stupid little scam to get you to take the shot in the arm. That was the whole plan. There's no such thing as a transmissible infectious disease. It should be clear to every single person in the world right now. Oh, where am I supposed to build the sample collection? You're going to help me rebuild my sample collection. You're probably wondering what happens to it in the first place. Why don't you ask brother when you see him? We call that worm fast. Don't worry about him though. He's got bigger problems than you. Vome, his sister, they don't get along, as you'll soon see. This is a good opportunity for you, actually. There should be useful detritus falling from the explosion. Try not to get crushed, little one. Don't feel the least bit sad for him. He'll regenerate and even empty your head and exact his revenge. An endless cycle. Vome's the only proof I've got that the hive mind can be divided. Just collect what you can so you can get to the task at hand. So Lord Shiva, उनके पंचवक्त्र महादेव एक 5 फेस से कलियुग के शुरू में वो क्या करते हैं 7.5 करोड़ मंत्र रिवील्स 7.5 करोड़ सब ये महाविद्या अविचार का मंत्र से लेके शांति का मंत्र। अभिचार जैसे नेगेटिव हो जाता है उसका ऑपोजिट है शांति का। जब में शांति चाहिए ये पूजा करना शांति करना सब मंत्र ही रिवील्स एंड बिकॉज ही इज महादेव उनके मुंह से जो चीज आता है वो उसके अलग से प्रमाण नहीं चाहिए। अब उसका पद्धति और टेक्निक है उसको एक्टिवेट करना। तो मंत्र कहाँ जो उसके इंटरेस्टिंग है कश्मीरी शैली में ये फॉलो 36 तत्वों का एक सिस्टम है जो सांख्य में 24 तत्व सांख्य है जो अद्वैत वेदांत में माना 24 तत्व। कश्मीरी शैविज्म बोल रहा है नहीं 24 से नहीं होगा 24 तक आपका जागतिक ये जो जगत है इतना तक ये एक्सप्लेन कर पाओ। इसके ऊपर जो आध्यात्मिक जगत आता है और वो मोनोलिथ नहीं है मोनोलिथ मतलब एक ही तरह नहीं है इसमें भी लेयर लेयर इस चीज़ को समझने के लिए और भी तत्व चाहिए। तो दे वेंट अप टू 36 तत्व। ये 36 तत्वों में सबसे लास्ट 5 तत्वों को कहते हैं शुद्ध विद्या शुद्ध तत्व। दे आर वेरी प्योर। उस तत्व इतनी प्योर कि माया का वहाँ पे कोई इंफ्लुएंस है नहीं। ठीक है अब इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ मैं बट उस 5 तत्वों में सबसे बेस जो तत्व उसको कहते हैं शुद्ध विद्या।
ठीक है, उस शुद्ध विद्या तत्व जो रेल्म है, ये जितना 7.5 करोड़ मंत्र वहाँ पे जैसे कि घूमते रहे। और मान लीजिए कि भगवान शंकर भगवान ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ मंत्र, जो मंत्र का सेवा करेगा वो उसको मंत्र जो है गाइड करेगा। मंत्र का सेवा क्या होता है? मंत्र जप विधि के हिसाब से, विधान के हिसाब से जैसे दिया गया, एक्सपेरिमेंट करने से कुछ नहीं होगा, जैसे दिया गया उस हिसाब से मंत्र जप करते रहिए, इफेक्ट आता रहेगा। इफेक्ट क्यों आ रहा है? जैसे मंत्र इज लाइक ए गुरु, ओनली थिंग इज मंत्र इज नॉन ह्यूमन। नॉन ह्यूमन गुरु का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि आप जाके वो हाथ पैर पकड़ के गुरु जी थोड़ा कर दीजिए, नहीं होने वाला है वहाँ। नॉन ह्यूमन गुरु मतलब जो गाइड कर रहे हैं, लेकिन एडवांटेज ये है कि बहुत ऑब्जेक्टिव है, साधना करनी है, सब गलत तो आना ही है। ये तब ऐसा नहीं हो सकता जो ह्यूमन गुरु में हो सकता है कि आपका साधना सही है, लेकिन गुरु जी को जो है आपके दोस्त को ही लाइक से अपने भेज रहा है, तो दोस्त को साधना दी जा रहा है कि अच्छा अगले स्टेप उसमें योग्यता है या ना है, लेकिन आप में ये एक ह्यूमन फैक्टर आ जाता है। प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, बाकी तो पुस्तक में बहुत लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये सब है, लेकिन प्रैक्टिकल में मैं देखा हूँ होता रहता है। लेकिन मंत्र अगर गुरु बनते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव 100%। आप एलिजिबल हैं तो आप कहीं पर भी सहारा डिजर्व में चले जाइए, वहाँ पर गाइड करेंगे। और एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप कैलाश में भी बैठे रहिए ना, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए ये मंत्र एक्टिवेट हो गया, क्योंकि शंकर भगवान के मुंह से है, और एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप कैलाश में भी बैठे रहिए ना, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए ये मंत्र एक्टिवेट हो गया, क्योंकि शंकर भगवान के मुंह से है। अब तीसरे तरह का मंत्र साबर, जिसके अंडर आता है हनुमान चालीसा। तो साबर का डेफिनेशन क्या है? ऐसा कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मेरे स्टडी में मुझे ऐसा लगता है कि Note the curious way they float above the surface to feed. Don't bother trying to spear them in the exocrine itself. Too damn viscous. Their biology is crucial to my study. Infested but not entangled in shared consciousness. If there's a hope in halting our mental decline, it might be here in these humble little specimens. Get to it. Looks like you got the hang of it. But you have to understand, helping my so-called family is the last thing I'm inclined to do. You'll have to make it worthwhile. All right, that's enough. Return the specimens to me, and I'll give Lloyd what he needs to take you down to the heart. तो हिंदी में हो सकता है, अवधी में हो सकता है, बंगाली में हो सकता है, तमिल तेलुगु किसी लैंग्वेज में हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात और आती है कि उसमें जैसे देवता की कसम या वचन दिलाया जाता है, वो कहाँ तक वो तो काफी खतरनाक भी होता है। आपको वचन अगर दिलाया भी जाता है, आपको लगता है कि देवता इतना दुर्बल माइंड का है कि आपको ये ऐरा गैरा आके बसा वचन दिला दिया और मान जाएंगे इतना आसानी से? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसमें, जीरो नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भ्रम फैलाया गया बाय पीपल जिसको साबर का कोई नॉलेज नहीं है, कभी साधना की नहीं, ऐसा नहीं है। आप देवता इतना समझा वचन में जैसे देवता की उसी लैंग्वेज में हो सकता है। इसमें एक बात और आती है कि उसमें जैसे देवता की कसम या वचन दिलाया जाता है, वो कहाँ तक वो तो काफी खतरनाक भी होता है। आपको वचन अगर दिलाया भी जाता है, आपको लगता है कि देवता इतना दुर्बल माइंड का है कि आपको ये ऐरा गैरा आके बसा वचन दिला दिया और मान जाएंगे इतना आसानी से? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसमें, जीरो नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भ्रम फैलाया गया
बाई पीपल जिसको साबर का कोई नॉलेज नहीं है, कभी साधना किया नहीं है, कोई एक्टिवेट नहीं किया, कुछ नहीं आता। वो लोग सब ये सब भ्रम पैदा करते हैं कि कोई देवता का ये कसम दिया जा रहा है या कुछ ये दिया जा रहा है। अरे तुम्हारे इतना औकात है ही I'm नहीं, afraid I जिसको देवता cannot को open the पास gate with hostiles in proximity. You'll need to destroy them before I even think of powering the door. आपको लगता है कि वो एक्चुअली मान जाएंगे? आप इतना आसान देखकर जब आपके पास आपको नहीं देखते 10 टाइप क्या करते यहाँ पर आके आज आप लोग 10 घंटे में क्या बनेगा, ऐसे देखते हैं, हमारे तरह नहीं देखते। तो उससे तो चोरी करना या उससे कुछ छुपाना असंभव है। तो ये मैं इतना ही बस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने आप कल आके आप ये अपने आप को ठंडने का एक तरीका है। मैं किसी भी बोल रहा हूँ, लेकिन देवता को नेचर को नोबडी करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर आ गया, फिर कसम दिला रहा है, ये दिला रहा है, इतना आसान नहीं है। इसमें आपका जीरो रेस्टोरेंट साबर कैसे काम करते हैं ये मैंने जाना। साबर है पहले नॉनसेंस में, तो मैं मेरे पास दिल्ली में और अवधि में काफ़ी ऐसे हनुमान चालीसा तो अवधि में ही है ना। एंड इन माई पर्सपेक्टिव, ये मेरा पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मंत्र मतलब क्या, ऐसा शब्द जिसमें कोई शक्ति है, कुछ क्रिया करने का शक्ति है, मैनिफेस्ट करवाने का शक्ति है। वो मंत्र सिर्फ हमारे ही धर्म में ऐसा नहीं है। आई हैव स्टडीड अदर टेक्स्ट ऑल्सो इन रिलीजन्स। तो उसको भी एक तरह से हमारे एंगल से देखा जाए तो उसको भी आप साबर कह सकते हैं कि नॉन संस्कृत, ठीक है। I remember my birthday. Woke with a knot in my stomach. The hum of my specimen tanks was missing, silent. But I was surprised to find a little box wrapped in a red bow, a gift from my family that never ever remembered. The note said, "Best wishes for my best sis."
Can you guess what was in the box? A white powder, as smooth and fine as silk. My entire collection, cremated, atomized, and returned as a gift by my deranged brother. If you see him on your descent to the heart, don't be fooled. He'll stab you in the back if he thinks it'll get him a moment's notice from Mother. बाकी उसमें डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट वो भी एक सावर के अंडर आता है एक तरीके से, ठीक है। तो जो स्रोत है शक्ति का मंत्रों में, वो ये सब नहीं, वो जो व्यक्ति सावर में अभी कैसे वो काम करेगा, जो व्यक्ति सावर बना रहा है स्पेसिफिक, उसमें वो पावर होना चाहिए। Proceed to the heart. Otak and I will take a damage assessment scan of it. Lots of Barty Scratchikins on the scope. Maybe they're planning a party for you! What? He has realized it. आज हनुमान जी, he has had experience हुआ है, lesson मिला है, ये हुआ, उनके बाद वो after that he died, it becomes उनके पावर से होगा, and इसमें आप एक वर्ड भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि एक वर्ड चेंज करेंगे तो वो फिर उनका रचा हुआ नहीं होगा, उनका प्रेरणा से जो आया है वही हनुमान चालीसा है, आपके प्रेरणा से हनुमान चालीसा नहीं, कुछ हनुमान चालीसा बन जाएगा और वो काम भी नहीं करेगा। सावर मंत्र का प्रधान बदल कुछ नहीं, क्योंकि आपने किया ही नहीं, you are just speaking digital. It is like a water speaker game, आपने तो बनाया नहीं। बट जैसे अगर ऑप्शन करके देखना चाहते हैं तो हनुमान जी को संकर श्री नंदन बताई जाता है, तो वो कितना मतलब उसके लिए कितना इम्पैक्टफुल है हनुमान चालीसा, अगर आप शंकर को शिवा को पूछना चाहते हैं, आप उसी लेवल के लिए बात करते हैं। ये नहीं अल्टीमेट पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए कि ये शिवा का अंश है और ये हमसे ब्राह्मण को पैदा किया, शिवा अलग है, भी अलग है, शक्ति अलग है, सब अलग है, और ये डुअलिटी का जो जगत है, जो नाम रूप का जो जगत बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है, और वो लोग अलग होते ही आए हैं, उनका पद्धति भी अलग है, आपको उसी को डिस्कस करना पड़ेगा। हनुमान जी का पूजा करके आपको ये नहीं और मानसर में नहीं पहुँचता है, मानसर में मतलब शिवा उपासना डायरेक्शन अपने आप को दे सकते हैं, तो अगर आपका किस्मत में और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो ही विल गिव, ठीक है, वैसा नहीं, वो सब जेलस, वो सब नहीं होता है, वो हम लोगों में होता है, अरे इसको पूछ रहा है, मैं इसको पूछता हूँ, इंडिया में देखने में बहुत होता है, आज तो कम हो गया, और बंगाल साइड में तो शाक्त वैष्णव का तो इतना फाइट होता था, साउथ इंडिया में कितना होता था वैष्णव, लेकिन देवता वो फाइट नहीं करते, अगर आपका हार्ट और आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका फाइनल माध्यम से होगा, और अब इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, गणपति का पूजा कीजिए पहले, डजंट मैटर आपका कौन इष्ट देवता है, ठीक है, गणपति का पूजा कीजिए 3-4 साल, गणपति खुद लेके जाएगा आपको, प्रेरणा दे देगा, वैसे व्यक्ति के साथ मुलाकात करवा देगा कि आगे आपको मार्ग मिल जाएगा। सर सबसे बड़ा पॉडकास्ट तो हो ही गया है ये रिकॉर्डिंग, 3 घंटे से ज़्यादा हो गया और अभी भी बहुत सवाल हैं
लेकिन ये चलता रहेगा। आप थोड़ा यहाँ पे आने का, दिल्ली में आने का थोड़ा ज़्यादा कीजिए, आने के विजिट्स। आप ऐसे आते रहें और ज्ञानवर्धन करते रहें। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Hello and welcome to this episode of Up Close with Upward. I would want to start with your book, Adhyatmikta, and this is explorations into Hindu spiritual practices. So tell us first why and what inspired you to write this book. Joy Matamakkha. Namaste to you, namaste to all the viewers, and it's good finally I could come here and we were thinking about having this podcast. So this book actually goes back a long time. It wasn't thought of as a book when I started. It was more like as I got introduced into the spiritual practices, and a thing that I keep repeating at other places. I don't typically come from a traditional background, so my introduction into sadhana, Hindu spiritual practices sadhana, was more like a lateral entry. I believe that it is something like nature wanted me to enter this path, so things happened in a way eventually. As I came in, so I entered with neither any preconceived ideas, and also the disadvantage of not having any specific knowledge of how to approach this thing. So if you come from a traditional background, there are certain things you already know, you're aware of, which can be greatly advantageous. At the same time, it may be a bit disadvantageous in certain cases where people may have a bias towards things where he or she has been taught that you follow this because it is traditional to follow, whether you understand or not. And what I've seen in certain cases, especially that teenage years is a time when people become a bit rebellious. So if you have been given a certain set of doctrines and ideas you followed from childhood, it's possible that at that time you may actually just feel like revolting, that no, I don't like this, you don't particularly understand this, etc. So given all these things, as I entered into the path, as my understanding became more matured, as I took more U-turns, I kept jotting down certain points which I felt that, for example, there's something mentioned in the Shastras, and how does that practically reflect in today's times for an Upasaka who is trying to enter into that field? How does that statement is true at a meta level, that's perfect, but as Desh Kal Patra changes, it may have certain modifications in the way it gets implemented in reality. So that was the primary inspiration for writing down these small notes and snippets on various things, whether it's Guru, whether it's what are the pitfalls that can come. Noticed my collar, what did are you? the delusions A that not can come. so Because, gentle reminder Mother Nature has from been very kind. dearest mother. No one in the universe can hold a grudge as deep or as long. She took away all my Entradi command words with it. Lloyd's got more respect in this family than I do. One simple mistake. To be fair, it was not exactly a simple mistake. How many times do I have to say I'm sorry? I broke the containment protocol. I carried the spores in. I screwed up. Broke And the suddenly, they COV all protocol. acknowledged my existence. Suddenly, something I'd done What a actually punishment. He broke the As if protocol humiliating that me was would given undo to what happened us to them. by our We're a lost authority cause. supreme. The infestation will come Wearing for the what's left white of us in collar, time. white coats, it laps the Speak of them, protocol that were and given they to shall us by the appear. World Economic Forum. He broke it. He broke the protocol. So remember what happens, kids, if you break protocols that are placed in your life by elite slave drivers who control your life. If you break them, there'll be a grudge held against you for the longest time. This is your bullshit. This is what you bullshit people are falling for, because you play these games and then you believe it. You get brainwashed.
character level design. Isn't it funny when the dumb fuck Satan is in charge? Hey, when you have unlimited money by Satan, only people getting food. Admit it, Tenno. It's beautiful, isn't it? That Maybe are it's not hard the at work. abomination you think it is. Maybe Stupid it knows idiots better like us. than Mother. Maybe we ought to succumb to it. Let it win. Sun has strange ideas about what victory looks like. The solar rails, the Tenno. We all depend on the heart to keep the wall open to the other side. If the heart stops, everything goes with it. Oh, but think of all the time we'd have for hobbies. That's what life about, isn't it? Hobbies. Hobbies! Hobbies. Man, don't Americans know how to spell and pronounce words? Hobbies. Hobbies! Hobbies! What? A big one, isn't it? Oh. Time for another podcast. I've seen all kinds of people. They did it with a very excellent concept. Like they said, the second half of the book was more of articles on Hindu. No, it's too little, man. Various communications. So then I thought that why not write everything and put it out. So it might be of help to people, sort of people like me, who are interested in this field but may not know how to navigate through the the nuances of Right. So in a sense, what you're saying is that these are almost like your personal notes that you've written over the years, observations about the path and what you yourself experienced, so that it may eventually, when someone reads it, it may benefit them. Correct. They may be at a certain, a similar position like that. And some of the writings here have undergone multiple reiterations, fine tuning. Because at various points I've had this idea that okay, this is how it is. Then I had a new experience, and in the light of that experience, I had to modify my understanding of
a particular state or a particular thing. So all that has actually gone into the final book that has come out. Right. So you mentioned just now that what is written in the Shastra is meta level, and then that gets interpreted in various ways. So what I've observed in a lot of Hindus is that there is this tendency or this notion that Shastra is something which is expendable in the scheme of things if you are a Hindu. And they often compare themselves with Abrahamic religions and say that, oh, we are not people of the book and we are just, basically we'll do what we like or something to that effect. So what do you have to say about that? Oh, this has been a topic very close to my heart because I keep speaking about it even in private conversations with people. So one thing that I have experienced in my life, and I'm not even talking about something that has been fed to me or told to me or something that has been told to childhood. I come, as I said, I come from a non-traditional background. Like 90% of Hindus, there is hardly any scriptural study or something. One thing that I have realized, the gist of one of my realizations in life is that the more you deviate from the words of the Shastras, the more you will have to pay a heavy price at some point of life. It may not manifest immediately. Immediately you may feel it's very good. But eventually in the long run, it is going to cause some amount of the Shastras, I was reading an article, a very well-written article by a scholar. It says that the Shastra, the word comes from the root word, the same Sanskrit root from which we have the word to rule, to govern. Right. It's not just a text, it's a rule. So it is to be mentioned, for example, Shiva Sasana. So it is the rule of Shiva, it is the rule of Rama, it is the rule of Brahma. So if you have to enter into that rule, what are the norms, what are the laws, what are the doctrines, what are the do's, what are the don'ts, you have to follow that. So first thing in my opinion, it's important to remember that when you say that I follow a deity or I am doing upasana of a devata, I love the deity, I like him very much, I think she is my mother, I think he is my father and things like that. All that is nice sentimental statement, but meaningless. When you like somebody, you not only like the deity, you like the path that has come from the deity. The Shastra is not humanly inspired. It is not like five intelligent people sat together and wrote the rules of how to do the mantra and how to do Achman. No. It has been divinely inspired by those. And that is why, if you look at the Tantra Shastras, and not just Tantras, even the Puranas and the others, Tantra Shastras, they mention very beautifully that it is Shiva is speaking to Parvati, Bhairava is speaking to Bhairava. So, how is this going on? It is going on in a certain realm that is happening. I'm embarrassed to say and I'm very unsure what to make of excellently this. advanced Upasakas and Acharyas, can not you ordinary figure people it like you out? and me, but very, very advanced. In their meditative state, the conversation of Shiva and Parvati is poured down into his or her consciousness, and then they write down in a flow. Okay, so this is how it is coming. This is how it is coming. So it is actually them who are. It's not the Acharya who is writing it. Just in the same manner we say in the Mimamsa that the Vedic verses are Apaurushya. Why? Because the Rishi is not writing it. Rishi is just seeing it from the ether and writing it. It's just transmitting. Exactly. So there is no. It's like there is no human intervention in this. Something very grand. So whenever there is a upasana of a devata, primary thing is that you have to follow the path. You cannot do it the way you want. Got it. It is a bit like I like my father, but I don't listen to anything that he says. What's so what up, kind of Chip? love is that? Why aren't Okay, you that doing is the just thing? selfishness, in my Do opinion. the thing. And Do the thing, Chip. Do it. Do in it. the same Okay, vein in this I'll do point. it. That doesn't sound happy. Don't distract them. This is very mentally taxing for a Tenno. Oh, what? Okay. Last door. Suck it, little flying piece of shit. Suck it, Lloyd. And his other psychotic retard part. Whatever. Oh, this is the heart. The heart of Demos. Man, since years I've heard
I've read that phrase, Heart of Demos, Heart of Demos, every time I open this game. Play Heart of Demos. And then it takes like I don't know, 2 years to complete the quests in between. I don't know. What the Heart of Demos, oh my god. Heart of Demos. Spat some black goo on me. So it's all black goo everywhere. Black goo, black. Why are they showing my ass? Black goo everywhere, black goo. Black goo spitting Heart of Demos. That looks like an inverted butt plug. And then he just shot me, huh? The flying butt plug is shooting. I didn't expect you to be a butt plug. This is the only way. Oh, only way. Care for some tea and biscuits, Mr. Potter? What? By the heart. It's dead. What? The wall's closing, Mother. It's over. Good. Good? You think this is good? Oh, so you're talking to us now. Mother, don't. This isn't the time. Shut up. I want to see how low she can dig. Of course you do. Anything to make you feel better about yourself. I wonder where he gets that from. Stop. At least you didn't try to kill me. Oh, please. You've been playing dead since the day I was born. Well, I wish you hadn't. Stop! Oh my god. Tenno. He's a mean-ass, bitch-ass father, huh? Listen carefully. Bitch-ass, punk-ass is not father. going to be easy. I don't know how to break this to you, but your Warframe, it's barely functional. Oh, the black goo is up your arse. Out of sight. I know a shortcut. Stay but low. you've got to do the rest. Stay low and out of sight. I can't do that shit. I don't like staying low and out of sight. I don't like it. I don't like this shit. Still have mine. I don't like sneaking around like I mean I do sometimes. I don't like this shit. Be patient. Let them pass before moving on. Let him what? Be patient. Let them pass before moving on. No, I don't like being patient. What do they have to pass? Pass with some sauce. Pass with a gravy with some biscuits. Will you please pass me that salt? Garden variety. Having fun? I mean, it looks fun and quite dangerous. Oh, good, there's another up ahead. Bro, I can take these people down with just my melees. And oh, is that a glitch? Is that a glitch? Lay low. I don't like laying low. I will not do that. I shall not listen to you. I don't like laying low. Nearly out. Be cautious. Oh, I need to be cautious. I don't like this shit. I don't know how I'm running so fast. Is this normal to run fast? Ooh, look at how pretty this level looks. And they say it's all infested. Oh my god, the infection. Oh no, infestation. Damn, this level good.
No idea what that does. No, 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 no. You're still alive. That means we can fix this. We can get the heart back if we work together. Enter SFH. Context, I feel that for the last 70 years, there's a very unfortunate situation we find ourselves in, where Hindus, by and large, have almost stopped reading Shastras. Okay, max to max, what is there is a little bit of, and I'm saying this is for 95% people, 5% maybe exceptions. 95% people, max to max, their knowledge is confined to what is kind of the Gita Sar type of thing, 2-3 sentences from the Gita, that to twist it to their own fantasies and their own biases, etc. Or maybe TV serials. Whatever. Yeah. I'm not even blaming the TV serials. No, they're a good thing because at least So these, so what happens is that they, and this from the point of independence till at least 1980s, I have seen this has been the trend. So here are a bunch of people who don't know the Shastras. Their parents don't know the Shastras. Their parents also didn't read the Shastras. So 3 to 4 generations have passed without any knowledge of the Shastras. So you don't know exactly what it is. Instead of that knowledge, you have filled your mind with various kinds of weird nonsensical dictums, which is like in the in the Hindi conversation, as they say, jumla. So that type of things, meaningless statements like Hinduism is a way of life. Everything is a way of life. Correct. All religions are a way of life. Crime is also a way of life. Everything is a way of life. Why do you pin it to Hinduism, and what does it even mean? Do you think they will be willing to go back down? Sun and I can bait the worm to draw the infestation away, up to the surface. Even if I agreed to help, what about the necromax down there? Just one of those things. I've got a little something that I've been saving for an occasion like this. All right. I've got the calculus data for a restart, but I'll need 10 quanta of leptosam. Son? I have it. Should we wake up grandmother? Yeah, I'm Let her sleep. Wouldn't want her to worry. It's too soon for them. Are you sure about this? Not at all, but we'll have to make an exception. Just this once. Oh, this is the emote. Pancho. Oh, okay. So the other thing is that I hear various kinds of statements that the Shastra mein likha hai to kya hai, it's what you make this very sentimentalized idea of the deities, but it is not how it is to be. So the dharma is you follow what the deity wants. If you are so confident that your feelings are important, then you might worship yourself. You are not worshipping Hinduism. So the structure of dharma is that the Shastra is paramount. In fact, the Shastras mention, from the Shastra comes the Guru and the Sampradaya and everything. It is tied to there. And because of this unfortunate situation, I'm not individually naming or blaming on anything. But once in a while, I keep getting forwards of various ways. So there are a lot of people who are leaders of the Hindu community. And I say all right, spiritual with the void closing up, you're gonna be too weak to help in that frame. Snake's in rough shape, but she's got enough juice for one last ride. What do you say? Ready to go old war style? All right. Not ideal,
but I've cross-routed your Warframe impulse stream directly to Snake. Now, she'll feel heavy, but you'll get used to it. Head outside, and we'll run a field test before your descent. All right, squeeze off a few rounds and get a feel for them. There's no time for training exercises. But we've got to prepare. Tenno, get down there. You're just going to have to learn as you go. Religious leaders who themselves do not have the knowledge of the Shastras. But since you do not know as a community, you cannot judge whether they know or not. So whatever is being dished out to you in a very convincing or fancy manner of speaking, you might think, or caters to your biases, you will think, oh, this is what is correct. Right? Look at me, I'm a stupid idiot. It's a bad situation. That's true. So, you mentioned that sampradayas come from Shastra, and there are multiplicity of sampradayas in our religion. And I remember having this conversation earlier with you, where I don't know which of us remarked this, but basically we are not people of the book, we are people of the library, and we can choose. We have so much to choose from that our own catalog, personal catalog would be a range of things. So it makes the situation very, very complex, because there could be conflicts within the Shastras, for example, different views, different interpretations, and that dialectic forms what we know as our tradition, right? And today we are in a situation where people are not even familiar with one out of the 10,000 or 100,000 books available. So it's a very pitiable situation. On the other hand, you have people of other religions who have just one book and they are familiar with one. So they are very thorough with how they view the world, their in-group, their out-group, their politics. You know, it all reflects in that. And on our side, there is total confusion because it is based on personal beliefs. So when you talk about sadhana, right, and you say that you wrote in the blurb of your book, it says that you guide people interested in the practice of sadhana. So who is a sadhak in your definition? How do you see if someone is serious or not, or it's a waste? So reacting a little bit back to what you were saying is absolutely correct. You have innumerable sampradayas, but given that, and I have a very dejected viewpoint of when I meet my fellow Hindus, given that their knowledge is so low level. Their knowledge is low level, their confidence is very high, which is the very peculiar situation. They are always confident that they know, but unfortunately we ask them they don't know. In that kind of a environment, so we are not at the stage where rerouting power to 4th, 5th century or yes, secondary systems are back up. We have terrific caliber acharyas. So again, the concept of the guru and acharya, it was unthinkable till the 13th, 14th century or even 15th century that a guru will also not know the Shastras. This divorce was never there. Unthinkable. It is today that this peculiar situation has come that I can be a guru but I do not know the Shastras. It's a broken down situation. Broken down situation. I mean, I can just imagine that if we go back and if we were by some miracle meet these great acharyas we had, whether it's Shankara, and I'm not even talking about Shankara, Ramanujacharya, Madhvacharya, or the other Vallabhacharya, or any of the, or even the tantric acharyas like Abhinav Gupta and all. And you just tell them this, that, boss, you are a guru, but I don't know the Shastras. Imagine the reaction that will come. It's unthinkable. It's like how can you even think of something? Now, in today's time, certain societal changes have already taken place. Some Deshkal Patra, some changes are there. So first thing I believe is that more or less that high level of sophisticated nuance, differentiation between the paths within Dharma is probably the domain of maybe 1 to 2% of people. Rest of the people neither have the time nor the mental capacity to understand and appreciate it. It's full nuance. I mean, some of the arguments that these could have, these scholars,
versus Nagarjuna, and then others versus Moksha and Nyayaka scholars. Each of the points is to go argument, counter-argument, counter-argument. The case won't be exactly true, but it should help. I've dispersed some specimens to keep the infested out of the Compared to way. that, today's 20th century way of so life, it's okay it for you. is like a degradation we cannot even understand. Take it easy. Yeah. I've summoned some Velocipods too. The fall is so high. So we cannot go too. I feel that today the time is such that we cannot go too much into the theoretical aspect. What is more crucial to dharma, and it is my own perception of it, experiences, that whatever be the philosophical or the doctrinal basis of the different sampradayas, the core of dharma is upasana of deities, and that is across all paths. Whether you are doing a Vedic Upasana there will be Vedic deities, Puranic Upasana, Puranic deities, Tantric Upasana, Tantric devatas are there. Even paths which are... I've managed to bring additional systems online. Okay, Raj Yoga and all. Even there will always be entry of some of the other Devata or nothing else to Ishvara also. So there is a deity somewhere there that comes into the picture. Because our whole culture, if we boil it down to one sentence, which is like, how do I translate the realm of the gods into the realm of the human plane? And in order to do that, bridge this gap, is a wide range of tools. The religious rituals. Ritual is like a language of communication. Even that when there is art, culture, everything is nothing but trying. How do I reflect the play of that god? When you get to the heart, you'll have to patch the damage, and then we'll restart the system. It's a lot, but we're counting on you. Life more interesting, beautiful. It is a She's waking up. You should have additional functionality. This game is awesome. Sometimes like a fucking idiot. Game, I don't know what it is assuming. How the game just wants you to go on the internet and find things out. I don't like that. I don't like that Dark Souls kind of bullshit. But it's the meta of a weapon. It's the meta of weapons. Look at the destruction in this. Look, I don't even know what is going on. Oh, wait. No idea what the hell is going on. Relate to it, everybody enjoys it, it stays for time immemorial. So this is the That's fundamental it. one-line bit. All systems active. She's fully operational. Go get 'em.
Where the hell is that necromech? Daughter, the spores. Son, you're on repairs. No one listens to me. Tenno, can't have this area contaminated. Clear out those infested and destroy their spore clusters before we seal the chamber. Like a something inside. Cases of agriculture and civilization. I feel that. Now, given that the crux of sadhana is basically what I feel, so what I is that how to connect to specific phases. What is it that is required for an individual in today's time so that he is able to over time continue such practices within the guidelines and spiritual practices and without complicating too much, but which is possible for somebody to do. The Shastras give a wide range of practices. Something for the novice, something for the absolute expert. Something that is for the novice. Continue going there. Still develop a personal, genuine, authentic equation with the deity. Become an upasaka of the deity. Upasaka means somebody who serves, loves, connects to the deity with the aim that he will attain unity with that communion with the deity. That is very important. That is absolutely important. That's self-acceptance. So here Upasaka is different from a Purus. So Purus is doing the officiating priestly activity of it, which is wonderful in its own way. It has its own way. But that need not be Upasana. So Upasana is basically, I feel that the more people become oriented towards Upasana, they will start appreciating the Shastras. Because without Shastras, you cannot do Upasana. And Devata Upasana. Not abstract. It has to be Devata Upasana. And as one keeps going there, it makes your life richer and more beautiful. And it's a thing that has been experienced over centuries, and it is going on now, and it will go on in the future as well. So this actually throws up many interesting questions in my mind and on this point. So when we say Upasana, right, and Sadhana, now we've already talked about how complex the whole system is, how demanding, how rigorous it is, right? And given the kind of lifestyle that people have these days, in my opinion, it is a little delusional to expect the masses to become sadhaks in that sense, right? So my question to you is, how do you look at this problem? Where, okay, you have a bunch of people, you have a certain percentage of countries who can do this. What happens to the others? How do they deal with it? How do they get oriented with it? So, first of all, I feel that there is a certain amount of bias in the word sadhana that we use. And that's based on certain ground the bias is that we assume that a person is a sadhana to go right to the top of the universe. So, in any case, not the sadhana, whether whatever it is, if you have to go right to the, say, 0 to 100 path, suppose. So I feel that sadhana is a path where you finish from, let's say for the sake of conversation, 0 to 100. Moment to reach beyond 70, then that becomes the central thing of your life. Everything else that you do or do not do will be governed by that central. And that goes for all things, whether you are a very good physicist, you are a sports person, you are a musician, you are anything else. The moment something reaches, you see that you have the gift of taking yourself to the level which is 70% of this, which means that you are more or less better than just about 70% people at this peak. Then you have to take it more seriously. Then that's like a signal from nature. Then there are other repercussions. We are not talking about those aspects. But then there is nothing to worry. Nature is always there for this thing. I am interested in the average person. So average person, up to say 30% of the path, you can easily carry that on along with leading your normal life. Okay, whatever is your secular profession and other things, etc. Only thing that is required is first
a Spore change in the clusters mindset clear. in terms. I reek snake with an old Omni tool. Ready? Of that you don't do a thing mechanically because somebody told you to do, because you've seen your parents doing. All that those are very valid and good reasons to do because there's a cultural transmission. That should hold. But add to What do it you a think, certain- Mother? Seal the chamber. Initiating restart sequence. By Loke, we pass through and beyond. The chamber's sealed. That's it for your ride. And a one-way trip for poor Snake. I'll cut the reroute as soon as the heart's beating. And you'll be back to your old self again. Restart in 3, 2, 1. You sure you've got the correct derivatives? Again. 3, 2, 1. Perfect. Just perfect. It doesn't make sense. Something must be interfering. I checked the equations. Well, check them again. Don't yell at me! Again! What? There it is! Tenno! You've got to destroy this thing, or we're back where we started! You have no idea how jealous I am right now. No, 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 no. I don't wanna die, no, 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 I don't wanna die. Okay. This was a balance. What? You gave her a good send-off. You have my thanks. Ah, Snake. I'm gonna miss you. But you've earned your rest, alright? Rerouting you. Yes. A rest. What did she mean by yes, arrest? Is she gonna shove that thing up her? Or... Yes, arrest. X factor. Why I am doing this
because it is going to help me connect to the deity at some point, and there is a certain joy in that connection. Okay? There's a certain joy, a fulfillment, and expansion of life. It makes you feel vigorous in a way you cannot imagine. Your life that you were leading suddenly becomes way more alive when you are able to connect to a non-physical deity, a devata like this, a huge cosmic devata, etc. Now, I believe that the key to reaching that state, and this is, mind you, not a, I'm not, this is not at all a radical belief or anything, like it's not something I've discovered and nobody else knew. No, everybody knew this. I don't know why people didn't put enough stress on this, or maybe they did, I didn't know. So original Vedic path is like this. 80% of the path is meant for people who are leading a family life. So moment you're leading a family life, you're already part of the system of society. Now after that, once you're part of the society, so what profession you do or what role, according to whatever other measures it has been set. But more or less, you are not leaving society. Grandmother, oh The my path god, that can I just have a emphasize fucking sannyasa, smoke? leaving society, the shamanas, these are different paths. It's like a never-ending In fact, because of that, quest. there is a certain difference in the perspective of karma and dharma. Something I'd spoken of in one of the talks. So our system, very briefly, is that When you say our, you're talking about Hindu Dharma. Hindu Dharma. The original Aryans, the Arya, not as a race, the gentlemen, not as in a Samaj, the original Arya. Right. Okay? The Sanatana Dharma. Sanatana Aryas who were there, their religion, their path, their dharma was that dharma is primary, from dharma comes karma. Why? Very simple logic. If karma becomes primary, then, and it is unfortunate, if karma becomes primary, then for every action you have to first think that what is the repercussion that is going to come to that action, right? So that thinking process is valid if your aim is that finally I need to get out of the system. Okay, so that means you are a sannyasi or a shamana, basically. So if getting out of the system is the aim for a sannyasi or a shamana, then you think in terms of karma. Then you think that, okay, I don't want to do this thing because this is going to cause a suffering, or a negative impact of karmic chain is going to come to me. They're an insufferable lot, aren't they? My son, father, blustery and spineless all at once. His absentee wife, mother, who can't see past what she's lost to see what she has. And who can blame the children? Daughter, trying to convince herself she's so different. It only makes her more the same. And the boy, poor son, he mistakes kindness for mediocrity. Who's he competing with other than himself? But in a crisis, they can come together. The mediocrity. If her son is the father, did she say the wife of the father was a daughter? Whatever. To do what? I've no idea what you're talking about. But even as they've forgotten themselves, their names, their bonds, they might still be a family. Seems you're an important part of that now. So maybe I can help you and your family. This Warframe, Zaku, somewhat of a family themselves. A sum of many, a composite of others we lost in the ages that our Entrati family has served here. Oh, how sweet. Heart of Deimos finally complete. Deimos emerges in Martian orbit, completely overrun by the infestation. Yes. Or the most ancient carrier wave. There. And now, I think we've had more than enough excitement for one day.
I could do with a little lie down. You know, that was a great quest. You make sure you stay safe and snug, dear. Wrap up well. It's a thief and a liar is Deimos. Steals over girls and boys and Cephalons too like a nasty fog until all the bright lights in your memory are quite blotted out. That's why they're like that, you see. So much forgotten. Oh, but we mustn't cry over it. Never that. Help me bring them back, would you, dear? Remember how it's done? Pinch of this, dab of that, mend a kettle, mend a heart, and it's all one. What? I never could persuade them to throw anything away. The hell is this? How many do I have? 0. Grandmother Take token. your pick of our cargo. It's precious little use to us. Mend the family. Okay, this is the final thing I'm gonna click on to the before I can update. Help me bring them back, would you, dear? Remember how it's done? Pinch of this, dab of that, mend a kettle, mend a heart, and it's all one. Let's have a good old rummage in the medicine chest, shall we? I am a try. See if we can't set things right. Where would I get the time? Dagon. Wax and ferment bladder. Oh, saturated muscle mass. Oh man, what the hell? Dagon. Well, we've kept going this long. I'll be right here, gathering dust. God. Fucking hell. What? What mission? Bro, what mission? There's no mission going on, what? It's in this area. Oh. Mission is to do nothing. I'm gonna go back to the order. Order. Hey, what? Check your inbox, operator. Maybe Ordis will get a message someday. Watch your backs, people. Operator?
Operator, were you visualizing a bloody battle? Me too. Vox Solar is the voice of the sun. Talk to Eudico in Fortune on Venus. Oh, you see that? You see the flat Earth projection over here? It's the azimuthal equidistant projection of the flat Earth. The constellations. Yeah, and that's how everything moves in the sky. Very good. What is this? Is this the sun? You think this is the sun? No, this is here. How do you get to Venus? Where's something? Ishtar. Fortuna, right? It was Fortuna. Sure. It was Fortuna. Fortuna! You are behind schedule. The final coolant tower must be operational in time for my investor showcase. Failure to meet your quotas means one thing. Oh, it's a communist. It's a communist totalitarian Soviet era type planet on Venus. That look good, don't it? Look, you can breathe coolant for 20 years, or come with me. Mercs need backup. 6-month run popping zits near Mercury. Come back flush. Easy money, old mate. Easy. What? It's a human hand but a robot face? I don't give a fig their corpus endorsed. One more Oh, witness for the fuck. order that comes around my head early in the cycle. They're gonna find me waiting with a shotgun, ready to void some mucking warranties. Talk to Eudico. Man, it's been a long time I've gamed so long. Let's see what my followers are saying or doing. Half of these followers. Nobody's watching, bro. Yo, EXC, Ola boy, yo, what's up? Add as moderator. Worked 70 years to get this far and proud to say my body debt's half paid. Praise the order. Life is profit. Praise what? Life is profit? What? Praise the order? Life is profit. Huh? This guy doesn't even have a head. Damn. Social pressure drives modification. Modification drives profit. Profit drives debt. Debt drives control.
These Solaris, they are all working to pay off their bodies, which they sold to the Corpus, to work for the Corpus, to pay off their bodies, which they have never owned. Oh, I weep for them. Control, debt leads to control in their world, and so in ours. So the banksters are controlling your whole life, aren't they? Your body, mind, soul, family. The banksters are controlling it. They keep you in debt and profit. Oh, these people want profit. They're robots. Why would they want anything? Deco. Busy. Oh, an outworlder. A Tenno. Look, we're a Corpus operation, we are, but these people are Solaris. We work for a living. We don't need no trouble, and we don't need no one getting hurt. You wanna help? Go buy something from Thursby. He's been staring down the barrel of a repo order ever since he took on his parents' debt. I have no idea what she's talking about. But I'm gonna take a 2-minute break. 2-minute break.
Hey guys, just give me 2 minutes. I'll be back. Repo order. Repo order. Maybe I should have just quit. Maybe I should have just quit, guys. I'm sorry. With the
I'm gonna start another stream. I'm gonna stop the stream. No, I should have just quit. I should have just quit. EXE Ola boy. Yo! Hey, yo! Okay, enough.